So friends, from today, we will begin our economic survey and the budget section. Now, before I say anything substantial about the survey and budget, keep this thing in mind that if there are 14 questions from the economy section, 7 to 8 will directly come from the survey and budget. That is the significance of economic survey and budget. You can say roughly 50% of the questions that you are going to encounter in the preliminary examination from the economy section, it will flow from the economic survey and the union budget, right? So, see, let me start the class with a surprise for you people. I thought initially that we would be requiring three classes to do everything in detail. But the survey is so comprehensive and the budget is so comprehensive that now I think we need 7 classes, right? So 6 classes for economic survey and 1 class for the union budget. अब ऐसा क्यों हो रहा है? समझ कर देखो. This is actually a revision batch for all of you, but you are reading the survey and budget for the first time. This is no revision for you people. Got it? So before I start anything related to the economic survey and budget, let me ask a very basic question to all of you. When the economic survey was published for the first time in India, do you have any idea about the history of economic survey? See, it was in the year 1950-51 when for the first time the economic survey was released, and it was released as part of the union budget. There was no separate document as economic survey. It was the year 1964 when economic survey was released as a separate document. Who prepares the economic survey, by the way? Who prepares the economic survey? Chief Economic Advisor, he prepares the economic survey, and he belongs to which department? Okay, which ministry is responsible for the creation of economic survey? इसमें तो किसी को doubt नहीं है ना? It's the Ministry of Financial Ministry, right? The Ministry of Finance. Now, Ministry of Finance has 6 departments. Are you aware about these departments? First is Department of Revenue, then Department of Expenditure, Department of Financial Services, Department of Economic Affairs, Department of Public Enterprises. ये जितने आप महारत्ना ये सारे देखते हो, उनके फाइनेंस का सेक्शन वही देखते हैं. Department of Public Enterprises अभी बना है recently. And the last one is Department of Investment and Public Asset Management, DIPAM. Have you heard about that? Now, which department out of the 6 is responsible for the creation of economic survey? Yes, Department of Economic Affairs. अब देखो, देखने के लिए लग सकता है कि बड़ा silly question है, लेकिन ये भी आ चुका है एक बार preliminary examination में. It is the Department of Economic Affairs, rather to be more precise, the economic division of the Department of Economic Affairs under the guidance of the Chief Economic Advisor that prepares the economic survey of India. Do you understand that? Now, who is the present Chief Economic Advisor, by the way? Mr. V. Anantha Nageshwaran, right? He is an investment banker. He is the present Chief Economic Advisor to the government of India. Now, what is the purpose of releasing the economic survey? What is the purpose of releasing the economic survey? Okay, where the economic survey is presented? Is it presented in Lok Sabha or is it presented in Rajya Sabha? Where it is presented? Is it presented in the parliament? Economic survey is not presented in the parliament. Economic survey is presented in both the houses of the parliament on the eve of the union budget. Just one day before the presentation of the union budget, the economic survey is presented in both the houses by the Honorable Finance Minister or Minister of State, Ministry of Finance, anybody who is second in charge. So look here, economic survey, it is non-binding in nature. मतलब economic survey में जो भी लिखा हुआ है, सरकार के ऊपर ये जबरदस्ती नहीं है कि सरकार को वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी. Then why do we need this economic survey? See, it's an authoritative guide to the Indian economy. It paints a complete picture of the present status of Indian economy and the future prospects of Indian economy. Do you understand that? Now, economic survey, keep this in mind, that it is presented in both the houses of the union legislature. It is presented one day before the presentation of union budget. It is an authoritative guide to the Indian economy and it helps in understanding the union budget. अगर हम सर्वे पढ़े बिना सीधा बजट पे कूद गए, then we will face a lot of problems. Do
you understand that? Because economic survey creates the framework in the light of which the union budget is presented in both the houses of the union legislature. Budget is also presented in both the houses of union legislature. But keep this in mind, the survey is not binding in nature. It is not binding upon the Ministry of Finance to implement the economic survey. Economic survey is prepared under the guidance of the Chief Economic Advisor, and a string of experts from various fields are called to study the Indian economy, its various sectors in great detail, and then an authoritative text is presented about the Indian economy. In short, you can say, अगर किसी को भी पता करना है कि इंडियन इकोनॉमी अभी कहां पर है और फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ दो. Do you get it? Now, what does economic survey actually highlights? Look here. Economic survey highlights the present macroeconomic situation of the country. Now, what is macroeconomic situation? Okay, there are three important macroeconomic indicators. Are you aware about them? The first macroeconomic indicator is GDP, or gross domestic product. The second macroeconomic indicator is inflation. And is GDP and inflation related in some manner? Yes. And the third major macroeconomic indicator is fiscal deficit. Do you understand that? So what is the status of government finances in the country? What is the status of prices in the country? And what is the status of growth in the country? If you want to know everything about them, you must revert to the Economic Survey of India. Do you understand that? Economic survey also highlights the trends in agriculture, industrial production. It also highlights that how much infrastructure has been created. And when we say infrastructure today, how many types of infrastructure? There are three types of infrastructure. One is physical infrastructure, second is human infrastructure, and the third one is digital infrastructure, right? Today we are talking about three important kind of infrastructure. Infrastructure is an enabler to growth. आप ये समझ के रख लो कि अगर मैंने कहीं पे सड़क बना दी, there's a great chance that people will start some economic activities around it. So infrastructure is always an enabler for growth, or it's a key driver for growth. Keep this thing in mind. So infrastructure कितना बना है पिछले 12 महीने में? Economic survey highlights that. Then how many jobs were created? Because growth is inclusive only when it creates jobs. Otherwise growth is not inclusive in nature. Correct? Economic survey also highlights that what is the present situation of trade in India. It means what is the export volume of Indian economy, what is the import volume of Indian economy, or what is the difference between export and import, which is nothing but balance of trade, right? It's a part of the current account, which is part of the balance of payments. I hope you are aware about these basic things, because I'm not going to repeat these basic things in the class, because we are in a specific section of economy, which is economic survey. Economic survey also, apart from highlighting the present trade position, highlights that where the Indian economy is heading towards. It means in the short term and in the medium term, what can you expect out of the Indian economy? अच्छा, ये वर्ड आपने सुना होगा इकोनॉमी के रेस्पेक्ट पे कई बार, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. How do you differentiate between these three terms? What is short term? Less than 90 day, 180 day, or 1 year? 1 year. See, anything, generally speaking, though different economies may have different nomenclatures, but generally speaking, short term का मतलब होता है less than or up to 12 months. It means 1 year. What is mid term? अब ये सबसे difficult है define करना. But generally there is a consensus that mid term means 5 to 6 years. That is mid term, where the economy will be in 5 to 6 years. And then comes long term. Long term means what would happen to the economy after a decade. Got it? So, in short, economic survey is an authoritative text to the Indian economy that paints a complete picture about the present status of the Indian economy and tells us where the economy is heading towards. Economic surveys understanding becomes indispensable for the understanding of union budget. हम union budget को नहीं समझ सकते, या we will not be able to appreciate the union budget completely unless we go through the economic survey at great length and breadth. Got it? And I already told you the importance of economic survey as far as the examination is concerned. See, you will have questions from economic survey as far as the mains examination is concerned, not only in GS paper 3, but also in GS paper 2 and GS paper 1, and even the ethics paper is not immune from questions from the economic survey, right? Because there could be an economic case study,
So you must know the economic angle also to your decision making. अच्छा एक चीज देखो, जब भी हम decision making की बात करते हैं, सबसे बड़ा hurdle क्या होता है? Funds होते हैं सबसे बड़ा hurdle, right? Like suppose if you have infinite funds, you can start anything, but funds are always limited. Remember, economy is the science of scarcity. Do you understand that? In fact, economy इस word का मतलब ही होता है scarcity. बोलते हैं ना economic class, business class. So economy matlab it's some sort of limitedness. Do you get that? So we will not be able to understand the budget, will not be able to perform well in the preliminary examination or in the mains examination unless we go through economic survey. I give you a bottom line on all of that what I have spoken so far. If you leave the survey, that is suicidal. Do you understand that? That's the ultimate. ये तो याद रहेगा ना? अच्छा चलो देखो, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में 12 चैप्टर्स हैं. So what we will do, we will be doing 2 chapters at a time. Got it? And I'll share with you people the detailed PDF of these chapters. So no need of writing anything, because if you keep writing, you will not be able to complete it within 7 days. Your focus should be on understanding, right? We will also, at the end of this section, I will take few questions in the class that will emanate from the economic survey, and we'll try to see that whether we are in a position to solve those questions or not. और अगर आपने कोई भी क्लास मिस नहीं की, देखो मैं तो नहीं मिस करने वाला. So if you people do not miss the classes, then you will be in a great position to handle any question related to economic survey. अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई सारे लोग हैं जिनको इकोनॉमी में थोड़ा सा टफ फील होता है, इकोनॉमी या थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो इकोनॉमी में. अगर आप सर्वे समझ लोगे अच्छे से तो हो सकता है आप 50% तो सही कर ही लोगे इकोनॉमी एरिया में भी. Got it? So let's start. The first thing that we will do is that how is the present global scenario? और उसके बाद we will just go through the slides, so it will not take much of our time, but the key here should be on understanding. अब अपना पेन आप नीचे रख दें. Close your notebook. Everything is written in the slide. No need of writing even a word. Don't worry about it. But have full attention. You can scribble whatever you want in your notes if you find anything substantial. Now, look here. The world economy has faced several shocks in the 20th century and in the 21st century up to 2020. But these shocks were always separated by a substantial time gap. So it gave an opportunity to the world economy to recover from the shock. But the year 2020 is a landmark year. Why? Because 3 economic shocks hit the world back to back. 2 of them most prominent, the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict. Correct? But before we come to this area, let's have a preliminary understanding of what these global conflicts were. Now, this thing is not given in the survey, but it is given in the PDF that I am going to share with you people. So have full attention here on the board and try to understand what were these shocks. Let me start from the year 1914. And you know, between the year 1914 and 1918, what happened in the world? The World War I. और जब भी वॉर होता है तो आपको पता है क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जनरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए. दैट्स व्हाई देयर इज स्कैरसिटी, एंड व्हेन देयर इज स्कैरसिटी देयर इज इन्फ्लेशन. गॉट इट? आल्सो फैक्ट्रीज आर बॉम्ब्ड ऑल द टाइम, पीपल गेट किल्ड ऑल द टाइम, so people die, so there is loss of labor force, there is rise of inflation. And you know that if there is inflation, if one way to curb inflation is to increase the supply of goods and services, but for that you need labor. And these were not the times of artificial intelligence, machine learning, etc. Most of the goods were manufactured by people in factory settings. Do you understand that? That's why when factories were bombed, the global economy contracted. Do you understand contraction? Contraction ka matlab? There was negative growth in the world economy. Got it? So look here. There were 2 important powers that were fighting the World War I. And what were they? The Allied powers versus the Central powers. Obviously, the Allied won the war. Then came the year 1918. And in 1918, the world was engulfed by a pandemic. Are you aware about that? The Spanish flu. But
I do not agree with its name, Spanish flu, but that's an altogether different debate. But anyhow, there was a flu which was known as Spanish flu. Now, Spanish flu caused havoc all across Europe and North America, because at that time, Europe and North America were very well connected. 1912 we have a year जब Titanic निकला था. Do you understand that? For United States of America from Great Britain. But anyhow, Spanish flu also caused large-scale death, GDP dropped, inflation rose, large-scale unemployment, all kinds of problems in the economy. Then, almost a decade later, 1929, the world entered the most tumultuous period, which is known as the Great Depression. And it lasted for 4 years. 7,000 production units closed during the Great Depression. 7,000 production units. So you can understand how many jobs were lost during the Great Depression. And obviously, no prizes for guessing that there was inflation, there was also large-scale kind of economic hurdles, and opportunities to open businesses were diminished drastically during the Great Depression. I'm not going into the details of these events because you already know them, right? You have read them in your world history classes. But then came the year 1939. Almost a decade later, and 39 to 45, what happened? It was World War II. This was more devastating than World War I. In fact, it is one of the bloodiest chapters of human history so far. Large-scale devastation. And this time also two powers were seeing themselves eye to eye. They were Allied versus Axis powers. Axis was the Rome-Berlin axis, later Japan joined it, and all of that, right? The Nazism, fascism, all those kind of things started at the time. But anyhow, now the combined destruction that had happened prior to World War II happened in World War II. In fact, more than that also. So जब भी ऐसा कुछ होता है, आप तीन चीजें समझ लो. First, there would be very high inflation. Second, there would be very high unemployment. Third, there would be fall in GDP. Got it? ये तीनों चीजें होंगी ही होंगी whenever there is an adverse situation. High unemployment, high inflation, and reduced output. That is what is going to happen. But then, see, the Cold War thing happened, but anyhow, it gave an impetus to economic production somewhere. Then came the year 1970s, or precisely if I say 73 and 79. Yom Kippur revolution happened in 73 when the Saudi king, King Faisal, he laid an oil embargo. Oil embargo का मतलब होता है कि अब oil नहीं जाएगा इन कंट्रियों को. और ये कौन सी countries थी? North America and Western European countries. And there was large scale oil crisis across North America. And in USA, they call petrol as gas, right? Like we have petrol pumps, they have gas stations. In fact, petrol is also known as gasoline. That's why they call it gas. So there was a gas crisis in, and do not get confused between this gas and natural gas. दो अलग चीजें हैं, ठीक? ये गैस है, gasoline मतलब पेट्रोल. So क्या हुआ था कि योम किपुर जो रेवोल्यूशन है, उसमें जिन्होंने भी इजराइल का सपोर्ट किया था, और आपको पता है पूरा वेस्ट इजराइल को सपोर्ट करता है, तो जिन्होंने भी इजराइल को सपोर्ट किया था, सऊदी अरेबिया एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एट द टाइम अरब पेट्रोलियम कंट्रीज ऐसा था, बाद में तो उसमें बहुत सारे जुड़ गए, वेनेजुएला, रशिया वगैरह. तो एनीहाउ, लुक हियर, दैट ओपेक उस समय जो था सऊदी अरेबिया के अंडर में था, पूरा इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया आज भी है, right? So King Faisal was the ruler of Saudi Arabia at that time. So he laid an oil embargo on Canada, USA, Germany, France, Britain, Sweden. So entire Western Europe and North America, it means the industrial areas of the world, they started facing fuel shortages. इतना fuel shortage हो गया that all the industries started closing down. Because a lot of oil is also used to generate electricity and power. And unless you have power in an economy, the economy will crumble on its own. But then came the year 1975, thoda recovery ho raha tha, but came the year 1979. And in 79, the Iranian revolution happened, right? When the Shah of Iran was overthrown and Ayatollah Khomeini,
assumed power in Iran. And the Iran-US tussle started then in 1979. Before 1979, Iran and US were great friends. Do you understand that? So they are friends turned foe now. So when reactionary powers came to Iran, they nationalized all the oil supplies and they ensured that no oil should go to United States of America. So again, United States of America at that time comprised nearly about 25 to 30% of world GDP. तो अगर 25 to 30% of world GDP पे आप पावर ही नहीं दे रहे हो या फ्यूल ही नहीं दे रहे हो, तो what would happen to global economy? Do you understand that? So global economy crumbled again. Then in 1991-92, there again started a war in the Middle East, which is known as the Gulf War. अब क्या हुआ कि इराक invaded Kuwait, and in order to make Iraq evict Kuwait, 35 countries launched a combined operation on Iraq. And these 35 countries were led by United States of America. तो किसी का भी झगड़ा हो ये तो रहता ही है, आपको पता है. So United States of America with 35 nations invaded Iraq. Do you understand that? And invaded Kuwait, in fact, to make Iraq go out of Kuwaitian regions. दो ऑपरेशन हुए थे यहाँ पे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आपके लिए, बट फिर नाम बता देता हूँ आपको. ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड एंड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. शील्ड वो थी जो तैयारी हो रही थी और स्टॉर्म जो था वो अटैक था. यू गेट इट? देन केम द ईयर 1997 और इस बार प्रॉब्लम जो है वो मिडिल ईस्ट से खिसक कर साउथ ईस्ट एशिया में आ गई. Thailand, especially the Thailand stock market crashed in one day. There was large scale meltdown. Do you understand the meaning of the term meltdown? What is the difference between meltdown and slowdown? देखो, slowdown का मतलब होता है, like say for example, let's consider 3 quarters of the economy. In the first quarter, the economy grew by say 7.1%. The second quarter 6.2%. Third quarter 5.3%. So it is growing. But there is a slowdown in the rate of growth. Do you understand that? That is known as slowdown. Do you get it? Whereas when the output turns negative, it means there is negative growth. Like say for example, in quarter 4, it becomes say -1%. Then that is known as contraction. You get it? When contraction happens for 2 successive quarters, that is known as a recession. And when recession continues across years, that is known as depression. Got it? समझ में आ गया ये? Meltdown क्या होता है? Meltdown means fall in share prices. Got it? Like say for example, there is a particular company, let me call it ABC, और इसका stock जो था, समझ लो, it was trading at say $2.5 at the New York Stock Exchange. ये हाल था इसका Q1 में. But समझ लो Q2 में ये हो गया $0.5. So it means ऐसा लगता है जैसे जो स्टॉक का साइज था, it is melting from the sides. You understand that? That's why the term meltdown. Meltdown का मतलब always fall in stock prices. Whereas slowdown means the rate of growth has dwindled, but nevertheless there is positive growth. Got it? तो देखो 1997 में क्या हुआ कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इन सब में मेल्ट डाउन हो गया. Now there is a term called financial contagion. Financial contagion means जैसे you have contagious diseases. So global economy is interconnected, especially after the fall of the Soviet Union. उससे पहले तो चलो 2 खेमे में बटा हुआ था, but now the global economy is related and Southeast Asian economies are completely intertwined with each other. तो एक में भी अगर प्रॉब्लम आता है तो सारों में प्रॉब्लम आ जाता है. That's why they have built that organization called ASEAN. Are you aware about that? To face common challenges together. वैसे ASEAN का मेन पर्पस तो चाइना को रोकने के लिए था, but it is also meant for their own economic recovery in times of distress. So look here, meltdown happened first in Thailand और ये सारी चीजें, but ये है जादू साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का, क्योंकि ये सारी इकोनॉमीज को हम कहते हैं टाइगर इकोनॉमीज. Now it is very hard to keep a tiger down
for a long period, right? So these economies are mostly export led economy. और आप कोई भी बिजनेस करो, समझ लो आप इंडिया में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अपना सामान बाहर बेच दिए तो जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा इंडिया में, जो इंडिया में बेच रहा होगा, आप उससे आगे निकल गए. गॉट इट? टिल द टाइम डॉलर इज वैल्यूड एट अ हायर रेट विथ रिस्पेक्ट टू रूपी, तब तक तो ऐसा ही होने वाला है. तो ये सारी इकोनॉमीज जो है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज हैं. एंड देयर आर 4 टाइगर इकोनॉमीज स्पेशली. दे आर हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड ताइवान. नाउ हांगकांग एट दैट टाइम वाज नॉट पार्ट ऑफ चाइना. गॉट इट? सो इन्होंने एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया और इन्होंने फाइनेंशियल हब बना दिया. मतलब इन्होंने स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स किए और अलाउ किया दैट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. यू अंडरस्टैंड दैट? Foreign portfolio investment or the foreign institutional investment, FIIs, they allowed them to come into the financial markets. और उन्होंने जैसे ही पैसा डाला तो डिमांड बढ़ गई तो the meltdown was reversed. Got that thing? So these economies came out of the crisis in 1998. This is the fastest recovery ever anywhere in the world. That's why these economies are known as the टाइगर इकोनॉमीज. इसके बाद जो परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस है वो हमारी है 1991 में जो हमने किया था एलपीजी रिफॉर्म्स करने. एनीहाउ, सो कमिंग बैक टू दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. बट देन चीजें लगभग ठीक ही चली. केम द ईयर 2008. उससे पहले आईटी बूम होने लगा था एंड द आईटी सेक्टर जंप्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एज द आईटी सेक्टर जंप्ड, आप देखोगे कि सारे लोग जो है अब आईटी में पैसा डालने लग गए. और आईटी एक क्या है? हाई टिकट एंटरप्राइज है. मतलब जो प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर है, समझ लो बैंक खरीद रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो कुछ हजार में नहीं खरीदेगा, कई लाखों में खरीदेगा, करोड़ों में खरीदेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो एंड नेक्स्ट, लॉजिस्टिकल कॉस्ट इन आईटी इज वेरी लेस बिकॉज यू ओनली नीड अ पावरफुल इंटरनेट कनेक्शन, गुड एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. आप कहीं भी बेच सकते हो अपना सारा सामान. So IT revolution हो गया and India also benefited from that IT revolution anyhow. So the IT boom happened. और ये IT का जितना भी, जो IT के जितने भी बड़े बड़े enterprises थे या MNCs थे, वो सारे कहाँ पे based थे? United States of America. Do you understand that? अब एक इंजीनियर अगर एक जॉब करने के लिए, जॉब मीन्स एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर उसको करने के लिए यूएस में 5,000 रुपए लेता है पर आवर, तो इंडिया में वही 250 रुपए में कर देते हैं. Do you understand that? So it was very easy to export these services to India. और इंडिया में क्या हुआ? इंडिया, ताइवान, साउथ ईस्ट, बहुत सारी कंट्रीज में एक कल्चर आ गया which is the BPO culture, call center, and they started resolving problems that were coming from United States of America and other parts of the world. But anyhow, कुल मिलाकर ये है कि आईटी कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा आया और यूनाइटेड नेशन का जो सेंट्रल बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है फेडरल रिजर्व और यूएस फेड रिजर्व. सो यूएस फेड रिजर्व ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की. दैट पॉलिसी इज नोन एज क्वांटिटेटिव ईजिंग. आर यू अवेयर अबाउट दैट पॉलिसी? क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब क्या होता है? दैट यू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स. व्हेन यू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, then banks borrowing from central banks, their loans become cheaper, and hence when they give to public loans, that also become cheaper. So whenever there is increase in interest rate by the Federal Reserve, जैसे RBI भी अगर रेपो रेट बढ़ा दे तो हमारे यहाँ लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे, अगर रेपो रेट घटा दे तो लोन्स हमारे यहाँ सस्ते हो जाएंगे. Do you understand that? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा. सो यूएस ने क्या किया? एक तो इतना बूम चल रहा था, और जब बूम चल रहा है तो लोगों को क्या चाहिए? फंड चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए नया नया एंटरप्राइज खोलने के लिए. स्टार्टअप कल्चर आप देखते हो इंडिया में अभी, वो स्टार्टअप कल्चर यूएस में इस समय चलने लगा. एंड इट वाज ऑल ड्रिवन बाय द सिलिकॉन वैली, राइट? बिग जायंट स्टार्टेड कमिंग अप. एप्पल को ही देख लो. एप्पल स्टार्टेड एज अ म्यूजिक कंपनी, राइट? और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गया, कंप्यूटर्स में घुस गया. उन्होंने पूरा अपना एक इकोसिस्टम बना लिया एक तरीके से. सो क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व या यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, that central bank reduced the interest rates. As it reduced the interest rates, there was a lot of money available for the entrepreneurs who were doing startups, and they put all the money, they made huge profits because they were outsourcing all their work to countries like India
And India was also benefiting because India had already seen an economic crisis, BOP crisis 1990, early 90. तो अब क्या हुआ कि पैसा बहुत बनने लगा लोगों के पास, और जब पैसा बहुत बनने लगेगा, so you know a lot of money will go to the banks. So ये सारा पैसा इन्होंने डाल दिया यूएस बैंक्स में. अब क्या किया बैंक्स ने, ध्यान से सुनना है इस बात को. यूएसए में बैंक्स ने क्या किया, इन्होंने लोन देना शुरू कर दिया. पैसा बहुत है इनके पास. जब पैसा बहुत होगा, like suppose you have 100 rupees in your pocket, suppose, and your friend asks you, can I have 100 rupees from you? तो आप क्या बोलोगे पता है, ये लो बट मेरे को शाम तक चाहिए. This is what you are going to react. This is how you are going to react. Or if he says no, I will return you after a week, you will say then return me 110, 10% इंटरेस्ट पे, क्योंकि अगर मैं रख दूं बैंक में तो 10% मुझे मिल जाएगा. ऐसा समझ लो कोई इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है. अब समझ लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं and somebody is asking you 100 rupees, आप ऐसे ही दे दोगे. So you get that? So when you have a lot of money, you try to give loans at less interest and quicker loans. Do you understand that? अब देखो borrowers दो तरीके के होते हैं. एक होते प्राइम बोरोवर्स, एक होते सब प्राइम बोरोवर्स. प्राइम बोरोवर्स वो होते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा होती है. इट मींस देयर इज हाई चांस दैट दे विल रिटर्न द लोन. मेरे सब प्राइम बोरोवर्स आर दोज कि कभी भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, मतलब ले तो लेंगे लेकिन पैसा लौटा नहीं पाएंगे. इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं. समझ लो मुकेश अंबानी वॉक्स इनटू अ बैंक, like suppose that is any bank, suppose State Bank of India, and he says that I want 5,000 crores loan. ये वो कहते हैं मुकेश अंबानी, right? So you know how bank is going to respond to that? Bank will say, sir please take a seat. क्योंकि उस लोन पे 1% इंटरेस्ट भी कितना हो सकता है आप समझ सकते हो. तो वो देंगे. Why? And they would be more than willing to give it. If they do not have funds, they will write to the government or to the RBI to capitalize them, so that they can give it, or they will borrow from other banks. मनी मार्केट में लेते हैं ना पैसा बैंक दूसरे बैंक से, तो वैसा पैसा लेकर दे देंगे उनको, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देंगे वो. क्योंकि 5,000 करोड़ पे 1% भी अगर मिल जाए तो बैंक के लिए कितनी बड़ी बात है. आप समझ रहे हो? Why? Because Mukesh Ambani or anybody of that repute is a prime borrower. Do you get it? आप समझ लो, आप जाके बोलो बैंक में कि मुझे 5,000 करोड़ का लोन चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो तुरंत गार्ड को बुलाएंगे. ठीक है, ये देखो ये क्यों आ गया अंदर, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री देखेंगे. हो सकता है बैंक अकाउंट में ही कभी 1,000 रुपए कंप्लीट नहीं रहे हैं, अब 5,000 करोड़ आप मांग रहे हो. unless you have a great vision or great product with you. Got it? So such kind of people are known as subprime borrowers. Got it? So in US also there were many prime borrowers and many subprime borrowers. तो ये वर्ड क्लियर हो गया आपको, प्राइम एंड सब प्राइम. अब एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, दैट वर्ड इज नोन एज मॉर्गेज. मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना. गॉट इट? लाइक से फॉर एग्जांपल इंडिया में हमको बहुत शर्म आती है जब हम बोलते हैं कि अरे मेरा घर गिरवी है, मेरी गाड़ी गिरवी है. लोग बताते नहीं है, आपने देखा है. लेकिन कई बार लोग गिरवी रखकर अपना सामान, पैसा उठाते हैं बैंक से, मार्केट से पैसा उठाते हैं, और दे अरेंज फंड से फॉर सम फैमिली फंक्शन और समथिंग लाइक दैट, राइट? बट इन यूएस वो सीना ठोक के बोलते हैं कि ये सब कुछ जो भी देख रहे हो सब मॉर्गेज पे है. यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब वो ये बताते हैं कि मेरा जो रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है मेरे किचन में वो ऐसी आइडल नहीं है, वो मेरे को पैसा कमा के देता है. यू अंडरस्टैंड दैट? सो दे हैव अ मॉर्गेज कल्चर, very popular culture there, but in India we do not have a mortgage culture, right? We have an accumulation culture. We believe in creating wealth. Do you understand that? Whereas they believe in creating income. Do you get it? Now wealth is the assets that you are holding. Income is when your assets give you some returns. That is income. Do you understand that? Ab dekho, look here very carefully. So I hope you understand these two words. First is subprime lending and second is mortgage. तो अब देखो क्या हुआ जब बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा, और आपको समझ में आ गया बैंक्स के पास इतना पैसा क्यों आया यूएस में. नाउ ऑल दिस बैंक्स दे स्टार्टेड लेंडिंग टू पीपल. जो जा रहा था उसको लोन दे रहे थे और कंपटीशन हो गया था सारे बैंक्स में, हु कैन गिव मोर क्रेडिट. द यूएस फेड रिजर्व वार्नड आल्सो कि रुक जाओ, इतना लोन मत दो, बट ये लोन देते रहे. और लोगों ने क्यों लोन लिया पता है? क्योंकि यूएस में भी लाइक इंडिया
homeless people are, they have a substantial number. And you know, in US there is large scale immigration, so most of the people, they are living in ghettos or they are living in shanty settlements, so they want pakka houses for themselves, so they got these loans to build houses. But the real estate sector collapsed in United States of America because of corruption and other kinds of things. और इससे क्या हुआ कि जिन्होंने भी पैसा लिया था बैंक से, सब प्राइम लेंडर थे वो सारे, और उन्होंने कैसे पैसे लिए थे? मॉर्गेज कर करके, और कई बार जो मॉर्गेज कर रहे थे वो उनके पास था भी नहीं. इट मींस दे डिड मॉर्गेज डेरिवेटिव. यू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव्स? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट? तो डेरिवेटिव पे ट्रेड कर दिया. मतलब आज से 1 साल बाद मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, तो आज मर्सिडीज गिरवी रख के पैसा ले लेता हूं बैंक से. यू अंडरस्टैंड दैट? ऐसे लेंडिंग हुई और लोगों ने अंडरटेकिंग साइन करवा लिया बैंक्स ने कि ठीक है आप मर्सिडीज खरीदोगे, नहीं दे पाए तो मर्सिडीज हमारी. बोला रखो, है ही नहीं अभी तो क्या मतलब, पैसे से मतलब उनको. यू गेट इट? सो ये सारा पैसा जो है डेरिवेटिव, मॉर्गेज डेरिवेटिव्स या मॉर्गेज बैक्ड डेरिवेटिव्स. और देखो शेयर मार्केट में तो हर तरीके धुरंधर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकाल लिया कि मतलब ये कैसे ट्रेड करेगा, उसके बेसिस पे दूसरा उसका डेरिवेटिव ट्रेड करेगा. मतलब समझ लो ऐसे कि आपने बोला कि मैं मर्सिडीज अगले साल खरीदूंगा तो मुझे पैसा दे दीजिए. अब आपका फ्रेंड गया, वो बोला कि मेरे फ्रेंड जो खरीदेगा मर्सिडीज मैं उससे ले लूंगा और मैं आपको फिर बेचूंगा, तो मुझे भी पैसा दो. यू अंडरस्टैंड दैट? सो डेरिवेटिव बैक्ड डेरिवेटिव्स. ऐसा मतलब कभी भी डेरिवेटिव जो होता है उसका एक अंडरलाइंग एसेट होना चाहिए. ये डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव बना दिए, इस तरीके का कुछ हो गया हाल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स. वेरी गुड. तो क्या हुआ? बैंक्स को धक्का लगना था. देयर इज अ वेरी बिग बैंक, लेहमैन ब्रदर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक एवर to do business on the face of the earth, ऐसे समझ लो. It declared bankruptcy. जैसे ही bankruptcy declare किया लेमन ब्रदर्स ने, सारे बैंक एक के बाद एक, सबको समझ में आ गया that their risk weighted asset is too much. Are you aware about capital adequacy ratio? Capital adequacy ratio simple words में आप ऐसे समझ लो कि आप किसी को 100 रुपए दे रहे हो तो आपके पास 20 रुपए तो होने चाहिए अपने. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे 100 किसी से उधार लेकर किसी और को उधार दे दो. Do you understand that? Are you aware about the Basel norms? So Basel norms talk about different capital adequacy ratio or capital to risk weighted assets. Got it? So capital adequacy ratio जब चेक किया सारे बैंक्स ने लेमन ब्रदर्स के बैंक्रप्सी के बाद, they found out that कि सारे बैंक्स, their assets have become toxic. और यू अंडरस्टैंड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सारे लोन जो है इनके वो एनपीए बन गए. ऑन द अदर हैंड देयर वाज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज पीपल वेर नॉट एबल टू गेट एनी फ्रेश एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एज बैंक्स क्लोज्ड देन लोन्स क्लोज्ड, एज लोन्स क्लोज्ड द एंटरप्राइजेस क्लोज्ड, एज एंटरप्राइजेस क्लोज्ड एम्प्लॉयमेंट क्लोज्ड. यू गेट दैट? That is known as the US subprime crisis or mortgage crisis or 2008 recession. Do you understand that? You already understand the meaning of the term recession. तो ये देखो, ये फिर भी 10 साल बाद हो रहा है ईस्ट एशियन क्राइसिस के बाद. Do you get it? Then came the year 2011. 3 साल फिर भी रुक गया मामला. और अब देखो क्या हुआ कि एक कंट्री है ग्रीस, सोक्रेटिस की मातृभूमि. ठीक है. इस कंट्री ने, अच्छा आपको पता है गवर्नमेंट भी पैसा उठाती है मार्केट से. कैसे ले सकती है गवर्नमेंट पैसा मार्केट से? बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट? और दे आर नोन एज व्हाट? G6. द अदर नेम फॉर देम इज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज. गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो सब डिफॉल्ट कर दें, गवर्नमेंट पे फिर भी लोगों को भरोसा है. आप किसी भी इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड में चले जाओ, यू विल फाइंड कि उनका जो मेन खाता है वो एसबीआई में है ना. क्यों? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है ये फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, भले वो ज्यादा इंटरेस्ट भी दे रहे हो, उनको पता है कि अगर इन सबकी लुटिया डूबी कहते हैं तो एसबीआई जो है वो बचा रहेगा. क्यों? क्योंकि उसको सरकार बचाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ लुक हियर वेरी केयरफुली.
government is the last to default, and government issues what? It could be T-bills. Are you aware about that? Treasury bills, and then dated securities. Dated securities are nothing but long term. T-bills are short term. And you know, short term means anything below or less than 12 months or a year. और इसमें टी बिल तरह तरह के हो सकते हैं, 7-day टी बिल, 91-day टी बिल, 180-day टी बिल, इवन ओवरनाइट टी बिल. यू अंडरस्टैंड दैट? ये सारा सब कुछ हो सकता है. तो देखो, ग्रीस ने ऐसे बहुत सारा पैसा उठाया इधर उधर से, वर्ल्ड मार्केट से भी टी बिल्स इशू कर करके. किसने? द ग्रीक गवर्नमेंट. एंड द गवर्नमेंट इज व्हाट? सॉवरेन. यू अंडरस्टैंड दैट? बट ये जब टी बिल्स मैच्योर हुए और ये डेटेड सिक्योरिटीज जब मैच्योर हुए, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ 91-day टी बिल, देन जनरली टी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू. डिस्काउंट टू फेस वैल्यू मतलब जैसे कि समझ लो टी बिल पे लिखा रहेगा 100 रुपीज ऐसे, बट गवर्नमेंट जब आपको देगी वो टी बिल, तो आप गवर्नमेंट को बदले में सिर्फ 90 रुपीज दो, और जब मैच्योर होगा तो आपको 100 पूरा मिलेगा. वो 10 जो डिफरेंस है वही आपकी इनकम है टी बिल पे. सो दिस इज इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, हियर द डिस्काउंट बीइंग ₹10 और 10%. यू गेट दैट? तो ये सारे डिस्काउंट टू फेस वैल्यू करोगे तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे टी बिल देने के लिए. यू गेट दैट? And also, you know that if government keeps on taking so much of money and then government will pump that money into the ecosystem, it will cause inflation. So you get that? So look here very carefully that जब बारी आई लौटाने की, ग्रीस said नहीं है हमारे पास पैसा. मतलब ये वो वाला दोस्त नहीं होता जो कई दिनों से आपका फोन नहीं उठा रहा, फिर आपसे मिलता भी नहीं है, फिर आप अचानक जब उसको एक दिन पकड़ते हो कहीं पे तो वो कहता है कि नहीं पैसे तो है नहीं, जो भी करना है कर लो, मार लो पीट लो, जो करना है कर लो, पैसे हैं नहीं मेरे पास. So you get that? So Greece was in that situation. That is known as sovereign debt default. Do you understand that? Technically put, when the sovereign has defaulted on its debt obligations. Got that? Now look here very carefully. ग्रीस तक मामला रुका हुआ रहता तो समझ में भी आता, but then Spain did the same thing. Then Portugal, then Ireland, then Cyprus. अब Cyprus का क्या ही कहना, ये खुद टैक्स हेवन है. Do you understand that? Do you understand what's a tax heaven? Like Mauritius is the tax heaven, Cayman Islands tax heaven, Panama Islands tax heaven. It means all financial operations there are doubtful. ठीक है? They have zero or no tax, and they share no tax information with any country. So when all these countries started registering sovereign debt defaults, then the European Central Bank came to their rescue. Especially the money was pumped by 3 countries, Germany, Great Britain and France. They are the big economies in Europe. और ये अपने भाइयों को बचाने लगे उस समय. और आपको पता होगा कि ब्रिटेन उस वक्त यूरोजोन में था, यूरोपियन यूनियन में, राइट? ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, तो उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन तो था ही. और एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई ब्रिटेन गॉट वेरी they were very repugnant with this idea of staying in the European Union for long. So look here, Germany ने कई बार पैसा दिया. Angela Merkel was at that time the German chancellor. She kept on pumping money into the European Central Bank that Greece cannot fail, Greece cannot fail, Greece is the cradle of Western civilization. If Greece fails, everything will fail. All those kind of things, right? तो ग्रीस ने पैसा लिया और ग्रीस को बोला गया कि आपको austerity measures करने हैं. Now, what is austerity measures? Austerity measures means when the government should cut down on its waste expenditure. Like say for example, जैसे सब्सिडी बांट रहे हैं बिना मतलब की, या फ्री बांट रहे हैं कोई सामान. So you have to reduce that. So the idea was to put Greece again on the path of fiscal recovery by telling them that you should adopt austerity measures. Now IMF is saying the same thing to Pakistan. Adopt austerity measures. Do you get that? तो ग्रीस ने बोला कि हाँ हम करेंगे austerity measures. पैसा लिया ग्रीस ने, फिर उड़ा दिया. ठीक है? और फिर से जब आया अपने टी बिल्स को ऑनर करने के डेट्स, तो उन्होंने बोला हमारे पास फिर नहीं है. तो इस बार ईसीबी ने आईएमएफ के साथ साठगांठ बना ली and said that IMF should rotate some funds into Europe through ECB. ECB took loans, soft loans
from IMF and put that money into these economies. एक बात देखो, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर यही सूडान या समझ लो लिबिया इन लोगों ने किया होता, या थाईलैंड, कभी आईएमएफ ईसीबी को पैसा नहीं देता, या उनके जैसे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनको पैसा नहीं देता. सो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन. एनीहाउ, उसके बाद क्या हुआ कि देन सॉवरेन डेट डिफॉल्ट हैपेंड इन यूरोप, which is also known as the Eurozone crisis. Yes, obviously because of their contributions to the ECB. Germany, Britain and France. That's why Germany and France ganged against Britain. So Britain felt कि थोड़ा discrimination हो रहा है उसके साथ, इसलिए Brexit हो गया वहाँ पे. But anyhow, देखो sovereign debt default happened and then there was something called double dip recession. Dip recession. अब इसका मतलब क्या होता है? Double dip recession. It means recession, you understand, negative output for 2 successive quarters. If that happens on an year-on-year basis, year-on-year basis का मतलब समझते हो आप इकोनॉमी में? जैसे like say for example March 2022 को recession था, समझ लो let's take 3rd March 2022 recession, 3rd March 2023 again recession. So point to point inflation होता है जैसा, तो year on year भी कहते हैं इसको. So year on year जब recession हुआ, that is known as double dip recession. समझ में आया? अब देखो ये है 2011 और 2011 में भी एक और चीज हो रही थी. इनफैक्ट वो 2010 से होने लगी थी, अर्ली 2010s, and that is the Arab Spring. Are you aware about that? Pro-democracy movement started first in Tunisia. From there it went to Libya. Muammar Gaddafi was thrown out. फिर वहां से सीरिया जैसी पहुंचा, बस वहां पे आज भी फंसा हुआ है. और आपको ज्यादा ताजुब नहीं होना चाहिए कि वो वहां क्यों फंसा हुआ, क्योंकि अगला ही सऊदी अरेबिया था. You understand that? And Saudi Arabia is a sultanate. You understand that? It's not a democratic country, and Saudi Arabia is ally of United States of America. That's why Saudi Arabia में कभी सीरिया में बशर अल असद वाला जो हुआ था, और वहीं से आपको पता है IS इराक सीरिया वहीं से बन के आया ऊपर. एनीहाउ, बट वो कुछ हुआ नहीं. और उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, ऐसे कुछ लोग नहीं होते जैसे आप उनको बोलोगे कि चलो बर्गर खाने चलते हैं, तो बोलेंगे नहीं मैं बर्गर नहीं खाता, कि आई विल गेन वेट, समथिंग लाइक दैट. तो फिर आप उनको बोलोगे कि चलो कुछ इंडियन फूड खा लेते हैं, बोलेंगे नो आई डोंट लाइक दैट, दैट्स टू स्पाइसी. So these people always throw tantrums. You understand that? तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा टेंट्रम थ्रो करता है इकोनॉमी में, वो है यूएस फेड रिजर्व. क्योंकि इनको मालूम है कि ये डॉलर बढ़ा के घटा के, प्रिंटिंग उसकी बढ़ा के घटा के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को पलट दे सकते हैं. You understand that? हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं. Why? Because we want to repay our loans in dollars. यूएस से अगर समझ लो किसी ने, यूएस ने किसी से पैसा लिया है या ट्रेड किया है, समझ लो कुछ सामान लिया है, तो यूएस को पैसा देना है, तो फॉरेक्स रिजर्व से थोड़ी ना देगा, वो तो बस प्रिंट करेगा और दे देगा. उसके पास तो फॉरेक्स रिजर्व्स है ही नहीं. जो है भी उसमें कैसे एसेट्स हैं जो लिंक्ड है डॉलर के साथ, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग एटसेट्रा, राइट? दैट्स व्हाई यू सी पेट्रो डॉलर्स, दे रूल द वर्ल्ड. बट एनीहाउ, कम टू दिस. So US Federal Reserve started a tantrum which is known as the Fed tapering tantrum. अब ये tapering tantrum क्या था? Tapering tantrum मतलब US Federal Reserve के जो गवर्नर थे, वो हर दिन सुबह आकर ये एक बयान दे देते थे टीवी पे या कहीं पे भी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यूएस में, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यूएस में. और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इट मींस बैंक्स के पास पैसा कम होगा. एंड मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स वर गिविंग लोन्स टू FIIs who were pumping in money into emerging markets. तो ये सारा पैसा वापस जाने लग गया और इंडियन रुपी स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग vis-a-vis द यूएस डॉलर. बट कभी किया नहीं उन्होंने. द आइडिया वाज टू पुल सम मनी आउट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट सो एज टू रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रोथ. क्योंकि इकोनॉमी टसल जो है वो असली टसल है, बाकी सब तो दिखावा है, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन 2010. Then 2011, then came the year
2014. 2014, you know, that at that time there emerged a war between China and United States of America. That war is known as trade war. Have you heard about that? And USA, it alleged कि चाइना दो चीजें करता है. एक तो इंपोर्ट बैरियर्स लगाता है जिससे यूएस के प्रोडक्ट चाइनीज मार्केट में घुस नहीं पाते, और दूसरा चाइना अपनी युआन को डिवैल्यू कर देता है जब तक, बिकॉज इट्स नॉट अ फ्रीली फ्लोटिंग करेंसी. So when you devalue yuan so frequently, then you know depreciating currency gives an incentive to whom? Exporters or importers? Exporters. Do you understand that? No doubt China के पास जो current account surplus है वो बन रहा था. हम जैसे current account deficit की बात करते हैं, उनके पास current account surplus है, वो सारा पैसा उठाकर कहाँ डाल दिया इन्होंने? BRI, Belt and Road Initiative, and that is known as the debt trap diplomacy. Got it? So this is what happened in 2014. डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग, उनकी एक बहुत बड़ी पिक्चर भी है G20 समिट पे टोक्यो में, व्हेन दे आर नॉट सीइंग आई टू ईच अदर. पिक्चर्स स्पीक अ लॉट, राइट? सो USA started adopting a policy which is known as protectionism. Protectionism means we will also protect our market, domestic market. Do you get that? And protectionism has been adopted by different countries at different times to give a push to their economy. Like the East India Company also adopted protectionism. They did not allow Indian manufactured goods to be sold in European markets, especially Britain markets. Do you understand that? So this is what happened throughout the 20th century and early part of 21st century. इतने सारे crises आए एक के बाद एक. Got it? But the year 2020 is a landmark year because एक ऐसा crisis आया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था. And what was that? It was the COVID-19 pandemic. ये वही है जिसके लिए पहले WHO ने बोला था कि it does not spread from man to man, तो बाद में उन्होंने बदल लिया इसको, right? And you know that there was a lot of doubts in and around how this virus got created, and China was alleged and all those kind of things, right? Some people started calling it Wuhan virus, especially the American president at that time addressed it as Wuhan virus. But anyhow, COVID pandemic आया, और जैसे COVID pandemic आया, first thing it did was it disrupted supply chains. And you see, China is the manufacturing hub of the world today, at least in middle end and low end products. High end products में अगर आप बोलोगे तो यूरोप है, यूएस है और जापान है, टू सम एक्सटेंट ताइवान है. बट लो एंड मिड एंड जो प्रोडक्ट्स हैं, सस्ते या थोड़े मॉडरेट प्राइस वाले जो प्रोडक्ट्स है, वो सारा कहां बनता है? मोस्टली चाइना में बनता है. और कोविड-19 की वजह से डिसरप्ट हो गया ग्लोबल सप्लाई चेन. एंड व्हेन ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर डिसरप्टेड, यू नो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज, देयर वाज हेल्थ हैजार्ड, and there was also large scale unemployment. Obviously this is the time, 2020, early 2020, when there is no vaccine. Do you get it? So people are dying at the turn of the calendar and people are losing their jobs. Companies started doing large scale layoffs. Do you understand the meaning of the word layoff? मतलब fire करने लग गए वो लोगों को क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे. Production units started closing down one after the other. So many people lost their lives during the COVID-19 pandemic, especially livelihoods. लाइफ्स तो बहुत हो के गए, लेकिन लाइवलीहुड्स उनसे भी ज्यादा लोगों के गए. करेक्ट? As the world was recovering from this, then you know Russia decided to invade Ukraine. The Russia-Ukraine conflict began, and Russia-Ukraine conflict means चार चीजों के प्राइसेस अब बहुत ऊपर जाने वाले, और वो क्या था? फर्स्ट इज wheat, then oil, then natural gas and fertilizer. And you know that fertilizer is required for the growth of agricultural sector, especially in densely populated countries, because you want to increase productivity, and that can be only through fertilizer or imposition of fertilizer. So the moment these, why wheat? Because Ukraine is one of the largest producer of wheat. Russia is the largest producer of natural gas, one of the largest producer of oil and fertilizer, both of them. They produce fertilizer to a great extent, but Russia mostly produces fertilizer. So again,
दिस हैपेंड इन 2021, तो रिकवर हो भी नहीं पाए थे कि एक और आने लग गया. सो यू गेट दैट. एंड देन जब कोविड पैंडेमिक आया तो सारी कंट्रीज ने, स्पेशली एडवांस इकोनॉमीज, कोविड क्राइसिस से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दिया क्वांटिटेटिव ईजिंग. क्वांटिटेटिव ईजिंग मींस दे ड्रॉप्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स. And you know, when interest rates go down, what happens? Loans become cheaper. And when loans become cheaper, they become attractive. And people started taking more loans, investing into the economy. And there was some recovery. Do you get it? But that also caused a lot of inflation. Because you know that when people will take more loans, loan लेकर क्या करते लोग? कोई पागल ही होगा जो लोन लेके सेव कर दे. समझ में आ रहा है आपको? लोन लेके लोग खर्च करते हैं ना. तो खर्च कहां करोगे आप? या तो यू विल डू इट इन एन ओपन मार्केट और इन अ सिलेक्टेड मार्केट, और यू विल डू सम इन्वेस्टमेंट्स. यू गेट इट? बट वॉट एवर द केस, यू विल स्पेंड द मनी. And as you will spend the money, there would be rise in money supply. And when there is rise in money supply, there would be inflation. तो क्या किया 2020 में ही, 2021 एंड 22 अर्ली पार्ट में, ये सारे इकोनॉमीज, एडवांस इकोनॉमीज, एंड यू कैन इंक्लूड यूएसए, कनाडा, all the countries of Western Europe, Australia, New Zealand also in that, they all started reversing this process of quantitative easing, which is known as quantitative tightening. Do you understand that? Quantitative tightening means they started increasing the interest rates. As they started increasing the interest rate, and mostly, you know, when I say advanced economies, they are all led by what? United States of America. और अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा टेंट्रम किसका है? यूएस फेड रिजर्व का. तो फेड रिजर्व ने सबसे पहले जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए. और जैसे ही फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, what happened? That the dollars that were there in emerging markets like India, Brazil, South Africa, etc., वो सारा डॉलर चला गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Why this happens? Now see, when the US फेडरल, ऐसे सिंपल सोच के देखो, कई तरह से हम इसको समझ सकते हैं, बट एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं. जैसे यूएस सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो बैंक्स ने भी अपने लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे. और क्या बैंक अपने सिर्फ लोन पे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या डिपॉजिट पे भी बढ़ाते हैं? डिपॉजिट पे भी बढ़ाएंगे. एंड व्हेन दे वुड इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक्स डिपॉजिट्स वुड बिकम अट्रैक्टिव. सो पीपल विल विथड्रॉ द मनी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट एंड पुट इनटू सेविंग बैंक. और यूएस सॉवरेन बॉन्ड्स या तो फिर ट्रेजरी बिल्स, बिकॉज दे नो नाउ दैट money is something worthy to hold. During inflation, people want to lose money because money is losing its value every day. And when interest rates go up, inflation is going down. So people would like to hold on to money. In fact, during deflation, people do not spend money at all. Do you get it? People keep on postponing their purchases because during deflation, money keeps on gaining value. During inflation, money keeps on losing value. तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े एडवांस इकोनॉमीज में, तो मनी की वैल्यू बढ़ने लगी उन कंट्रीज में. So they do not want to spend the money into emerging markets. They started withdrawing the money from the emerging markets and they started to put it into the US Fed Reserve. Do you understand that? Or the US T-bills. कहीं पे भी, जहां भी उनको मिलने लगा. So that happened, and due to that, the current account deficit of countries like India soared. Why? Because as the dollar is going out, the rupee is depreciating or appreciating? Depreciating. And a depreciating currency means what? Costly imports now. You have to spend more rupees to get the same amount of dollar. Like say for example, previously $100 equals to 5,000 rupees. Now $100 would be equals to 10,000 rupees. Suppose. तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे $100 लेने के लिए. वहां पे तो मार्केट में $100 का ही मिल रहा है वो सामान. So import अगर आपका कॉस्ट बढ़ता रहा, so then you know that you have something called the balance of payment. Balance of payment has two accounts. One is the current account, the other one is the capital account. Current account में भी दो चीजें हैं, merchandise and services, invisibles, transfers, etc. Do you understand that? Remittances, ये सारी चीजें आती हैं.
So in current account, you have something called balance of trade and balance of invisibles. Got it? तो इंडिया में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो खराब हो गया. वाई? वन ऑफ आवर मेजर इंपोर्ट इज ऑयल. वी आर अ एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री. और देखो यही कारण है कि इंडिया को कई जगहों पर पीछे होना पड़ता है. जिस दिन हमारे पास एनर्जी इंडिपेंडेंस आ गई तो सोच लो कि अभी जो हाल है उससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा नेशन. एंड दैट कैन हैपन विथ द रिन्यूएबल एनर्जी मिशन. यू अंडरस्टैंड दैट? सो वी आर डिपेंडेंट on Middle East, Russia, etc. for our oil purchases mostly. So current account deficit हमारे यहाँ बहुत बढ़ने लग गया. You get it? Or our import bills started rising. Why? Because the dollar started flying. Why the dollar started flying? Because all the central banks started doing quantitative tightening, or they started raising the interest rates. So people started taking money out of the emerging markets, kept them back into their own economies. तो ये सारी चीजें हो रही थी. और जैसे ही आपको पता है कि लोगों के पास पैसा कम होगा, then they would only go for important purchases. Like so for example, अब इंडिया जो है इंपोर्टेड शर्ट्स पे नहीं ज्यादा ध्यान देगा, इंडिया ऑयल पे ध्यान देगा, because our dollars are limited. Do you understand that? But if India keeps on purchasing only important things like oil, natural gas, etc., in other sectors trade will slow down. Like say for example, consumer durables or capital goods, or think of textiles, anything, the trade went down. So इससे क्या हुआ? चौथा क्राइसिस आ गया, and that was trade. It started falling down. अच्छा एक चीज देखो, कभी भी अगर हमको इकोनॉमिक पुश देना है तो दो चीजें कर दो, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक पुश हो जाता है. पहला, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, करेक्ट. और दूसरा, आप ट्रेड कर लो. Because after all, with infrastructure you will produce goods and services, but you need markets to sell that, so that you want trade. So trade also started coming down. So I'll just try to club them. So first is the COVID that came, COVID-19. Then there was Russia, Ukraine. Then advanced economies, they increased the interest rates, and trade, it started slowing down, especially in non-critical sectors. Got it? Critical sector could be oil, natural gas, etc. अब इन सब के बीच में जो है, we cannot forget China's zero COVID policy. इनकी अलग ही दुनिया है. Zero COVID policy. अब देखो, what is this zero COVID policy? Now, there can be a question from zero COVID policy, so listen to this very carefully. When the COVID-19 pandemic hit the world, most of the countries, including India, we adopted an approach, and that is virus is going to stay here. The virus is not going to go anywhere. Now, again, are you aware that the COVID cases are soaring in the country? So the virus is going to stay. We have to adapt to this new reality, and for that we adopted measures like large scale mass vaccination, selected lockdowns, etc. और इसका रिजल्ट भी मिला हमको, especially during the third wave. Omicron was not as devastating as Delta. Do you understand that? और अभी देखो कोविड चल रहा है कंट्री में, लेकिन कितने लोगों के चेहरे पे मास्क दिख रहा है आपको? Do you get it? Because we have learned to live with the reality. बट चाइना तो चाइना है. चाइना को ये लगा कि मतलब चाइना वो वाला बच्चा है, नहीं होता जो शाम को जब लोग सारे खेलने आते हैं तो चाइना को समझ लो नहीं खिलाया एक दिन, तब उसका ही बैट है, उसका ही बॉल है, वो नहीं देगा, खेल ही बंद करवा देगा सबका. तो चाइना वो है. चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी लगाई. अभी जीरो कोविड पॉलिसी क्या है? हम वायरस को ही हटा देंगे. वी विल नॉट गो फॉर वैक्सीनेशन, बट वी विल रिमूव द वायरस कंप्लीटली, एंड फॉर दैट China imposed strict lockdown. इतना strict था वो lockdown that people of the same family were separated for months. आपको पता ही नहीं वो कहाँ गया. और जब आप officials को पूछते हो तो वो ये कहते हैं कि जब वो recover होगा आ जाएगा. तुमको तो कुछ नहीं हुआ ना, बस ये पूछते हैं. तो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो ठीक हूं एकदम, क्योंकि उनको भी पता नहीं कहाँ डाल देंगे. और ये जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, this is what China did. China imposed lockdowns
in a very stringent manner. Shanghai, Guangzhou, Beijing, all cities were closed for months, including their financial markets, it means stock markets, because there also there is some human interaction. So when that happened, it completely disrupted the global supply chains again. Got it? Because China was not allowing any kind of economic interaction between China and the rest of the world. और उनके पास तो करंट अकाउंट सरप्लस है, तो वो बैठे हुए थे, और उन्होंने सारा पैसा कहाँ डाला है पता है? यूएसए के टी बिल्स में. ये डिफॉल्ट करेगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगा, पूरी दुनिया को दिखाएंगे देखो ये डिफॉल्ट कर गया, इसलिए अब युआन पे पैसा लगाओ. यू गेट दैट? बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है उनके, और बीआरआई भी बना रहे हैं वो अपना, बहुत दूर का सोच रहे हैं वो. एंड दैट्स व्हाई ऑब्वियसली यू सी दैट दे हैव adopted these draconian laws in order to do that. Xi Jinping, are you aware, declared himself leader for life? So क्या ही बोलोगे आप इस पे? डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये तो हुआ, और साथ में चाइना में जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट सेक्टर, इसका वैसे तो 6 to 7% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, बट नियरली 25% इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है पूरी कंट्री में. डू यू रिमेंबर द सब प्राइम क्राइसिस इन यूएसए? तो इन चाइना फॉर सेवरल इयर्स, चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, दैट इज द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन चाइना. Chinese are making different kinds of buildings, residential and commercial buildings, and for that Chinese banks were giving very easy loans or less interest loans to consumers. So they took all those loans and they started building houses. तो चाइना में एक सिचुएशन पैदा हो गई जिसको कहते हैं रियल एस्टेट बबल. अच्छा, have you seen that? Kids will play with something like a surf solution and a bubble maker, put it and they will blow air, and then there would be bubbles that would come out. Now these bubbles, as they grow in size, what happens to them next? They blast. You understand that? It means saturation occurs in them with respect to their elasticity at least. So real estate bubble जैसे ही आया चाइना में, चाइनीज अथॉरिटीज जो इनके होश उड़ गए, क्योंकि अगर चाइना का रियल एस्टेट बबल फटता है तो चाइनीज इकोनॉमी मतलब ऐसे नहीं ऐसे नीचे जाएगी. यू अंडरस्टैंड दैट? और चाइना का हाल बुरा होने वाला है. फिर वैसे ही सारे लोग इल्जाम लगाते कि इसी ने फैलाया कोविड में, तो उन्होंने रियल एस्टेट बबल को कम करने के लिए उन्होंने कर दिया दैट दे विल इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स. So the loans that were going to the real estate sector, they dwindled drastically. But बबल अभी भी बना हुआ है चाइना में, और वो जब तक फट सकता है. इसलिए इंडिया कई बार बोला है चाइना को कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके यहाँ, वो रोक देते हैं हमको, क्योंकि हमारा तो आप समझ रहे हो हम क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे रियल एस्टेट में, हम और पैसा दे देना चाहते हैं उनको, क्योंकि वो भी तो बीआरआई कर रहे हैं हमारे चारों तरफ. सो एनीहाउ दिस इज व्हाट हैपेंड. देखो, वैक्सीन पावर्ड लिविंग, ये दूसरा अप्रोच है, और पहला अप्रोच है जीरो कोविड पॉलिसी. ये चाइना का अप्रोच है विच स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, हार्श मेजर्स एंड कंप्लीट आइसोलेशन. द आइडिया इज टू एलिमिनेट द वायरस फॉर ऑल टाइम्स, एंड वैक्सीन पावर्ड लिविंग इज द वायरस इज गोइंग टू स्टे एंड यू हैव टू अडेप्ट विथ द न्यू रियलिटी. करेक्ट? तो ये एडवांस इकोनॉमीज हो, इंडिया हो, हमने सबने वही वाला फॉर्मूला अडॉप्ट किया है. In fact, we very early focused on vaccine making. Do you understand that? But anyhow, look at this. As the real estate bubble, it started enlarging in China. Chinese जो banks हैं उन्होंने interest rate बढ़ाया, और loans जो है वो total outlay जो है उसका वो reduce होने लग गया चाइना में. Got it? So these are the problems that happened back to back. And in fact, you see that due to COVID-19, education and employment both suffered. याद आ रहा है कोविड वाले क्लासेस? मतलब like you are very keen to read but you are not able to read. Remember those days? But then the offline classes जैसे खुली तो सबके लिए अच्छा हुआ.
learning outcomes, because digital penetration was not great in India and in many countries, like African countries. तो कोविड की वजह से एजुकेशनल आउटकम्स बहुत सफर हुआ एंड एम्प्लॉयमेंट, पीपल लॉस्ट देयर एजुकेशन एज वेल एज देयर लाइवलीहुड, बिकॉज एजुकेशन इज द की टू लाइवलीहुड. सो बेसिक खराब हो गया. अभी देखो बहुत सारे लोगों को ये चीज सुनना पड़ रहा है कि अरे तुम्हारी डिग्री तो कोविड वाली है. मतलब लोग विश्वास नहीं कर रहे कि तुमने मेहनत करके एग्जाम दिया भी है. कई लोगों को तो देना भी नहीं पड़ा. तो दैट हैपेंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? सो यहां तक बात क्लियर है? गॉट इट? ओके. See, this is how we are going to have our notes. So history of economic survey, as I told you, 50, 51, 64 में separate हो गया. Non-binding document है, presented in both the houses of the Union Parliament. Economic survey is prepared by Economic Division, Department of Economic Affairs, और Chief Economic Advisor के उसमें reference में departments भी मैंने लिख दिए क्योंकि मुझे उम्मीद थी. And then what is economic survey? I've already highlighted that. It is a complete document which tells us about the present status of the Indian economy and where the economy is heading towards. In fact, you'll not be able to understand the budget unless you understand the economic survey. Now, what are the chapters of economic survey? And we are going to do the first two chapters today. The first one is State of the Economy 2022-23, because you know that is the financial year that we are going to, because economic survey is for the present financial year. Budget is for the upcoming financial year. Got it? India's medium term growth outlook with optimism and hope. अच्छा, अब देखो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में obviously that's why some credit must be given to the chief economic advisor. उन्होंने इतना अच्छा सर्वे बनाया है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा फैक्ट्स पे होता है और जो सेकंड वाला है वो फाइनेंशियल फिलॉसफी है. You understand that? Like say for example, State of the Economy 2023, it is what it is. You understand that? Recovery complete. Now that's a financial philosophy. Do you get that? Similarly, India's medium-term growth outlook with optimism and hope. So that is, ये जो second part है ये आपकी mains के लिए ज़्यादा important है. Got it? Whereas the first part is more important for the prelims examination. Similarly, again you see fiscal developments, revenue relish. मतलब जैसे relishing an opportunity means you are enjoying that opportunity. Got that thing? Similarly, देखो monetary management and financial intermediation, a good year. Prices and inflation, successful tightrope walking. Social infrastructure and employment, the big tent. Climate change and environment, preparing to face the future. Agriculture and food management, from food security to nutritional security. Industry, steady recovery. Services, source of strength. External sector, watchful and hopeful. Physical and digital infrastructure, lifting potential growth. Got it? So ये 12 chapters हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हर क्लास में 2-2 chapter करेंगे. The idea is to learn the survey inside out. और अगर आपको सर्वे आता है, you will not face any problem in GS paper 3 or in the preliminary examination. इकोनॉमी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, वैसे भी आसान सब्जेक्ट है. So look here, this is the first chapter and I've already highlighted that I have discussed so far. पहला First World War, then the Spanish flu, then the Great Depression and how GDP कितना contract हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको information के लिए दी है, याद रखने की जरूरत नहीं. Got it? Then you have the Second World War. Then you have the oil crisis. Can you see? Sorry, no gas. Then the Gulf War. Then the East Asian crisis. Then the 2007. Can you see Lehman Brothers Chicago? How it collapsed. Then let Greece breathe because of austerity measures. Can you understand? I mean, को ये हो गया था जिसे कहते हैं ना, ग्रीस को नानी याद आ गई थी जब इसने दोबारा पैसे उड़ाए. And then you have the US-China trade war. And this is that picture that I was talking about in Osaka, G20 2019. देखो कैसे जा रहे हैं दोनों. They're not even looking at each other because the trade war is at the peak at that moment. Are you clear with these things? Now, look at this. I have also highlighted here, Asian tiger economies typically include Singapore, Hong Kong, South Korea and Taiwan. The economic growth in each of the Asian tiger is usually export-led, with sophisticated financial and trading hubs
क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो आपको ट्रेडिंग हब तो चाहिए होगा, जैसे पोर्ट्स हो गया. सिंगापुर पोर्ट इज अ वेरी पॉपुलर पोर्ट, इट्स ऑल्सो एन एंट्री पॉट, राइट. देन प्रोटेक्शनिज्म, वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे. ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? आप टैरिफ बढ़ा सकते हो, इंपोर्ट कोटाज लगा सकते हो कि इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा. देन द प्रेजेंट ग्लोबल economic scenario, there are 6 major economic challenges after 2020. I've highlighted that as well. First is the COVID-19 pandemic. WHO जानबूझ करके लिखा है यहाँ पे. Russia Ukraine conflict, and then you have the third challenge, which is when nations undertook monetary tightening or quantitative tightening, or say, can you see the CAD is increasing, soaring, all those kind of things. तो जो World Economic Outlook, who publishes World Economic Outlook? IMF. और ये क्वेश्चन आ चुका है. World Economic Outlook is published by IMF, or I think there was World Bank, United Nations, UNICEF. कुछ लोग UNICEF भी करके आए थे, but है क्या? IMF. Do you understand that? Then financial contagion, ये ऐसे कुछ key words हैं सर्वे में इस बार that I have defined for you people, is the spread of economic crisis from one market or region to another and occurs at a domestic or international level. Non-financial debt. Non-financial debt भी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़ गया है एडवांस इकोनॉमीज में. What is financial debt and non-financial debt? अच्छा, आप लोगों में से किसका इकोनॉमी का बैकग्राउंड है? Anybody who has studied? Very good. Highlight the difference between financial and non-financial debt. Okay, what is debt? How is debt different from equity? Okay. Okay, what is the difference between equity, share and stock? चलो ये ज्यादा मजेदार है. What is the difference between equity, share? सुना है ये सब? क्या फर्क है बताओ? Equity, share and stock. बोलो. बस सर उठा के जिए. बोलो. क्या फर्क है तीनों में? ट्राई इट एटलीस्ट. तो इतने देर से मैं ही बोल रहा हूं, तुम भी कुछ बोल लो. ओके, व्हाट इज शेयर? लुक हियर. शेयर refers to ownership in an entity, in a company. Got it? Like say for example there are 3 people, one holding 40%, the other 2 holding 30% of the company. Then you say that A has 40% ownership in the company. Do you get that? Shares give you special rights. Rights like appointing directors, etc. in a company, auditors, etc. और जिनके पास शेयर होता है, they enjoy voting rights. Do you get that? They take major executive decisions also. बाकी जो executives हैं वो कंपनी को रन करते हैं. But executive कौन होगा? CEO कौन होगा? Chairman कौन होगा? ये कौन डिसाइड करता है? Shareholders डिसाइड करते हैं. Got it? So look here. ये शेयर होता है. Means how much ownership you have in the company. Debt means that you have given loan to the company, and now company has a repayment obligation upon you. Like say for example you have purchased a bond from the company. Bond paper जो होता है, ठीक है, अब वो bond paper समझ लो 100 रुपए का है और 10% उस पे इंटरेस्ट है. इसका मतलब कि आपने कंपनी को 100 रुपए दिया है, 1 साल बाद अगर उसकी मैच्योरिटी है तो कंपनी विल पे यू 110. Do you get that? Now company with that money, whether it makes more money or suffers losses, your money is secure. Do you get that? So bonds पे हमेशा जो होता है रिटर्न कम होता है because they are not so risky assets. Got it? Now bonds को ही debentures भी बोलते हैं. Debentures when they are issued by corporates. Got it? They are known as debentures. कई सारे debentures convertible भी होते हैं. Convertible debentures वो होते हैं जो आज तो बॉन्ड हैं लेकिन कल जाके इक्विटी में बदल सकते हैं या शेयर में बदल सकते हैं. Got it? So that is share. Share means how much percentage of ownership of the company that a person has. Got it? Now what is stock? Stock means the number of shares that you have. जैसे स्टॉक होता है ना, स्टॉक पाइल. So how many number of shares you have? Like say for example, a company has issued 100 shares in the market. Got it? And you have 40% of the company, or you own 40% of the company. Then how many shares in your stock? 40 shares? Because the total number of shares that are released are 100. If the total number of shares released are 1000, then you have 400 in your stock. You understand that? और कई बार क्या होता है कि लोग स्टॉक में होता भी नहीं और पैसा मतलब सेल कर देते हैं उस शेयर को.
दैट इज नोन एज सेलिंग शॉर्ट. सेलिंग शॉर्ट जो है वो दैट्स अ क्राइम इन इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम, राइट. अब इक्विटी क्या होती है? देखो, कंपनीज, ऑल कंपनीज डू नॉट दे gain success. Some of the companies fail as well. So when a company fail, the company liquidates. Liquidates मतलब आप उस कंपनी को धीरे धीरे बेच रहे हो उसका सारा सामान, एंड यू आर ऑनरिंग योर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. अब जिसने बॉन्ड में पैसा लगाया था, अब कंपनी आगे जाए पीछे जाए, कंपनी बर्बाद हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पैसा सिक्योर है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? लेकिन जो शेयर में पैसा लगाए हैं, if the company grows, they gain. If the company loses, they lose. Do you understand that? So shareholders take more risk, hence they get more rewards. Got it? Equity क्या होती है? When a company liquidates, मतलब वो कंपनी दिवालिया हो गया, उसका bankruptcy हो गया, अब उसको बेच रहे हैं. जब बेच रहे हैं तो उसको कितने शेयर्स में तोड़ेंगे हम? You can understand that? And every part of the company will be equal to any other part. It means there would be equitable distribution of the company among the shareholders. Got it? कि उनको उतना उतना loss झेलना पड़ेगा. That is equity, technically speaking. So are you understanding the difference between now what is share, what is stock, what is equity? Do you understand what is bond, what is debenture? समझ में आ गया ये सारी चीजें? Now, look here very carefully. So non-financial debt, bonds जो हैं, they are debt instruments. Debentures are debt instruments. Debt instruments are those instruments which causes repayment obligations. That is debt. मतलब उधार. Do you understand that? That is debt. या कर्जा इसको बोलते हैं. What is share? Share is not a debt instrument. It's an ownership instrument. So there are two types of financial instruments. One is the debt instrument. The other one is the ownership instrument. देखो, कोई कंपनी अगर खोल रहा है तो उसके पास दो तीन तरीके होते हैं पैसे लाने के लिए. कंपनी चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो दो तीन तरीके होते हैं. पहला तरीका तो ये होता है कि उसके पास जो पैसा है उसी पैसे को लगा के वो अपनी कंपनी बढ़ाए आगे. दैट इज नोन एज बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैपिंग. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट मींस यू आर पुटिंग योर ओन मनी टू रन योर कंपनी. सेकंड इज टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दैट इज नोन एज डेट फाइनेंसिंग. उसमें आपको अपने शेयर्स नहीं देने पड़ रहे किसी को, लेकिन आपने जो लोन लिया वो आपको वापस करना पड़ेगा. यू गेट दैट? सो गवर्नमेंट ने कई सारे फंड्स बना रखे हैं, जैसे एमएसएमई फंड्स हैं, जिसके अंडर एमएसएमईज जो शुरू कर रहे हैं उनको पैसा मिलता है. जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली कम होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट्स. गॉट इट? और तीसरा तरीका जो होता है पैसा लेने के लिए वो होता है फंडिंग रेस करना. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? फंडिंग में क्या करते हो? यू गिव सम पोर्शन ऑफ योर कंपनी टू द इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टर gives money to you. अब फंडिंग भी कई तरीके के होते हैं. सबसे पहले टाइप की फंडिंग होती है वो है एंजल फंड्स. जैसे कि समझ लो, एंजल मतलब क्या? फरिश्ता. कोई आ गया आपके जीवन में, देवदूत, उसने दे दिया आपको पैसा. बट दे आर नॉट एंजल्स. लेट मी टेल यू, समटाइम्स दे टेक अ ह्यूज चंक ऑफ द कंपनी. लाइक से फॉर एग्जांपल 40% ऑफ द कंपनी ले लिया और आपको एक इनिशियल पैसा दे दिया. अब आपके पास समझ लो एक छोटा सा प्रोडक्ट है, अभी मार्केट में वो टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो आपको तो इतना ही देना पड़ेगा ना, इतना बड़ा शेयर है. अनलेस यू हैव ऑलरेडी ओपन सम बिजनेस और थोड़ा सक्सेस है आपको, तो फिर तो बात अलग. बट इफ इट इज योर फर्स्ट वेंचर और समथिंग लाइक दैट, तो ये एक चीज होगी. देन वो सीरीज ऑफ फंडिंग होती है. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ए बी सी डी. तो वो रेस करते हैं बार बार. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, बट देयर इज अ लार्ज कंपनी वेयर नाउ द फाउंडर हैज ओनली 5 to 6% shares. In fact, I'm not going to name the company, but I'll give you the hint about it. No need of naming the company. It manufactures spectacles and it is very popular. Now the owner has only 12 to 13% and it has now gone down to 8%, the founder. In fact, SoftBank is now the biggest investor in that. Venture capitalist, आपने नाम सुना है? These are investment firms which invest in new ventures. तो चलो कहां से कहां चली गई बात. डेट दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल डेट वो होता है कि जो लोगों ने लोन लिया है आगे और लोन देने के लिए. जैसे बैंक्स व्हेन दे टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, क्या करते हैं बैंक वाले? उसको फिर आगे और लोगों को देते हैं. दैट इज फाइनेंशियल डेट. नॉन फाइनेंशियल डेट मतलब क्या होता है? व्हेन यू टेक लोन टू इन्वेस्ट और टू कंज्यूम, बट you do not give further loan. Got it? Like say for example,
ऐसा होता है क्या, कोई होम लोन लेके आया और बोला कि अब एक पड़ोसी को दे देता हूं ये मैं लोन, ऐसा तो नहीं होता ना. सो द लोन्स टेकन बाय इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्री, द लोन्स टेकन बाय कॉर्पोरेट्स, they are all non-financial debt, and non-financial debt is an important indicator of the economic health of an economy. You get that? तो ध्यान से देखो यहाँ पे, non-financial debt excludes the debt of financial institutions, that is those institutions that borrow solely to relend the money. Got it? Non-financial debt consists of credit instruments issued by the government entities, households and businesses. या simple words में अगर आप बोलना चाहो तो industrial loan, commercial loan, treasury bill, credit card balances, etc. Do you get that? They are all non-financial. Now look here. Faced with the prospects of global stagflation, तो export रोक दिया लोगों ने, so export crunch आ गया. Then I have already highlighted this, the zero COVID policy, real estate crisis, and tepid fiscal expansion. Tepid fiscal expansion means the interest rates have been pushed up so as to save the real estate sector by China. अब देखो ये ना ज्यादा एक बैटल बन गया है चाइना के लिए to save Xi Jinping's political legacy. आदमी वही बड़ा है जो अपनी गलती मान ले. यू अंडरस्टैंड दैट? बट अगर ये लोग बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन पावर्ड लिविंग ही द वे आउट है, देन दिस इज व्हाट द वेस्ट वाज सेइंग, दिस इज व्हाट वाज इंडिया वाज सेइंग. सो इट इज लाइक अ पॉलिटिकल डिफीट फॉर शी जिनपिंग. तो शी जिनपिंग को जिद हो गई है कि नहीं हम कोविड को बिल्कुल हटा के रख लेंगे पूरी तरीके से, मतलब कोविड-19 वायरस जो है वो बिल्कुल गायब कर देंगे उसको. तो हो ही नहीं सकता. And they want to take the credit. Do you understand that? That we eliminated the virus completely. Because there is a charge that you created the virus. तो उसको अपने दाग धोने के लिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि we eliminated the virus. But anyhow, the sixth medium term challenge to growth was seen in the scaring from the pandemic brought in by the loss of education and income earning opportunities. तो ये सारी चीजें तो हो गई. देखो इतने सारे चैलेंजेस 3 साल के अंदर, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था, there were so many challenges that shook the world, right? But all of them were separated by a substantial time gap. So it gave the global economy a chance to recover. But these crises, these 6 problems, they have come back to back. 6 major economic challenges after 2020. We are still in the year 2023. और अगर आप देखो कि एक के बाद एक आने लग गए हैं सब. Now this I have highlighted the zero COVID policy of China. Now let us talk about Indian economy status and concerns. तो ये तो fact है आपके लिए. It will not change. Like say for example, India is poised to grow between 6.5 to 7%. तो ये तो नहीं change होने वाला, right? But keep this thing in mind. देखो 2 approach है सर्वे को पढ़ने वाला. एक सही approach और एक नहीं वाला. जो तो दूसरा वाला approach है जो most of the aspirants adopt, कि वो रटने लग जाते हैं. फिस्कल डेफिसिट इतना %, ग्रोथ इतना %, कभी नहीं पूछने वाली यूपीएससी ये, बट ट्रेंड जरूर पूछेगी. डू यू गेट दैट? इंडियन इकोनॉमी हैज परफॉर्म्ड वेल रिलेटिव टू द अदर इकोनॉमीज, राइट? एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द economic and financial institutions like World Bank, Asian Development Bank, IMF, etc. They all say that India will be the fastest growing major economy of the world. You understand that? अभी भी हमारी ग्रोथ रेट जो होगी वो 6.5 to 7% के आसपास. RBI 6.8 बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी 6.8 बोला है, लेकिन 6.5 से 7 के बीच में होवर करेगी वो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द सिचुएशन पैन्स आउट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. गॉट इट? India is also one of the biggest recipient of FDI in the world right now. तो क्या है ये फैक्टर्स जो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एज दे रहे हैं, इकोनॉमिक एज दे रहे हैं? देखो इसमें अगर आप देखोगे, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन रेजिलिएंट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एडवांस इकोनॉमीज. अगर आप देखोगे तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डेटा. तो ये सारे जो चार्ट्स हैं इनको आप जरा ध्यान में रखना. नो नीड ऑफ सेइंग दैट कि ये कर्व कैसा होगा, बार ग्राफ क्या होगा, ये ज्यादा नहीं. एक ट्रेंड याद रखना, जैसे ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, फिर वो नीचे आया, अब फिर वो ऊपर जा रहा है, वो तो कॉमन सेंस भी है आपके लिए. डू यू गेट इट? नाउ लुक एट दिस. ये सारी कंट्रीज जो हैं इनके ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2023 में, और देखो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है 2.7 के रेट पे चलेगी, अब ग्रो करेगी. 2022 में 3.2, मतलब there is a slowdown. You understand that? Advanced economies 1.1, United States 1,
यूरो एरिया 3.1 से 0.5, यूके 3.6 से 0.3। मतलब देखो क्या हाल है इन इकोनॉमीज का। आपको पता भी इकोनॉमी तो बिल्कुल उसकी बैंड बजी हुई है यूके में। जापान में देखो, जापान फिर भी अच्छा कर रहा है 1.7 से 1.6। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज 3.7, 3. नो गेन नो लॉस। चाइना 3.2 से 4.4 ही ग्रो कर रहा है। एंड लुक एट इंडिया 6.8, 6.1, वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ ऑल द मेजर इकोनॉमीज। गॉट इट। और इस बार तो हमारा बेस इफेक्ट भी चला गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस इफेक्ट? व्हाट इज बेस इफेक्ट? हाँ, जैसे कि समझ लो किसी ने जीएस पेपर 3 में 100 मार्क्स लाए, अब वो नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में समझ लो 110 लाता, तो इंप्रूवमेंट कितना है? 10% का है, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो कोई 10 नंबर ही लाया था पिछले बार जीएस 3 में और इस बार 100 लाता है, तो द चेंज इज टू मच, राइट? एंड ही विल बेनिफिट फ्रॉम अ लो बेस। अगर वो 10 से 20 भी ले आता है तो 100% ग्रोथ है। यू गेट दैट? तो लो बेस था हमारा कब? 2021 में, बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड-19। बट अब वो चला गया, 2021 में तो हमने ग्रो किया है। नाउ लुक हियर, नॉन फाइनेंशियल डेट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? मींस इंडस्ट्रियल लोन, पर्सनल लोन, ये सारे लोन का कितना डेट है। अगर आप ग्लोबल एवरेज देखोगे परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये Q2 का डेटा है 2022 का, तो आप देखोगे 248% ऑफ टोटल जीडीपी ये डेट है, नॉन फाइनेंशियल डेट वर्ल्ड का। आप कुछ कंट्रीज का देख लो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया देख लो 232%, मेनलैंड चाइना 295%, इंडिया का देखो 170% ऑफ इंडिया जीडीपी दैट इज नॉन फाइनेंशियल डेट। और ये भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज। और आप ये चीज देखो, ये कितना है, ये फैक्टर देखने लायक नहीं है, ये देखना है कि चेंज कितना आया है, कितने परसेंटेज का। तो देखो सबका पॉजिटिव है, इंडिया का नेगेटिव है। मतलब हमारे लोन्स जो हैं वो कम हुए हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट। You understand that? That's a very good sign. It means people are taking more risk in the economy. People are more investing into equity. And when people invest more into equity, then obviously you know the chances of growth enhances drastically. जो ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स का डेटा है ये। पर देखो कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में जो है वो अभी भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन वाला। देन अनसीजनल रेन्स हैव हैपेंड फॉर द लास्ट 2 years एंड हीट वेव, उसने भी प्रॉब्लम किया है। ये सारी चीजों को देखकर अगर आप देखोगे आरबीआई भी थोड़ा हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ जो है रफली स्पीकिंग यू कैन से 6.5 to 7% के बीच में रहने वाला है। ये आप एक डेटा अपने दिमाग में रखो, 6.5 to 7% इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो विद इन दैट रेंज। 6.7, 6.8 seems to be more appropriate at that time, and this is mostly because of these steps that India has taken. Strong domestic demand replacing export demand. Now, when the COVID-19 pandemic hit India, India was one of the worst sufferers because our health infrastructure is still nowhere near to the health infrastructure of advanced economies. And the general income levels in this country is also relatively less when compared to advanced economies. Medicines per capita is also less in India when compared to advanced economies. But look at the resilience of Indians and India as a nation. India decided we will build our own vaccine. Got it? And India successfully built that, and we undertook a massive vaccination drive. इसकी वजह से क्या हुआ? Contact services या sectors which require contacts, they opened up. Like say for example, tourism, for example, hospitality. So these sectors opened up, and as these sectors opened up, obviously you know they improve sentiments in the economy. Now sentiments के लिए एक technical word है that is known as animal spirit. Do you understand that? किसी भी इकोनॉमी को, मैंने आपको अभी बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो उसका और ट्रेड कर दो, तो दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो। बट उससे भी अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, इंप्रूव द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। Means people become optimistic. Like say for example, if you become optimistic about your selection, you will keep on doing hard work. But if somebody becomes pessimistic, कि कुछ भी कर लूं, होना तो है नहीं मेरा, वो तो पढ़ना छोड़ देगा। Do you understand that? So this animal spirit or this sentiments in the economy
they started improving because of this large scale vaccination drive. और ओमिक्रॉन वायरस पे ये दिखा भी हमको, इंडियंस अफेक्ट तो हुए बट द रिकवरी रेट वाज वेरी क्विक एंड टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया. सारी जगह पे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपको नहीं मालूम है तो एडवांस इकोनॉमीज में भी लगभग लग जाता है, हर 3-4 महीने में एक बार तो लॉकडाउन लग ही जाता है. बट हमने लॉकडाउन फिर से नहीं लगने दिया. इन अ कंट्री वेयर medical infrastructure is completely in shambles, where income levels are very low, where per capita medicine availability is at one of the lowest, where there is large scale poverty, still this is how India has performed. Pent up demand, ये word ध्यान में रखना. हो सकता है there could be a question around this word. What is pent up demand? A demand which was suppressed for a long period of time. Suddenly there is spurt in that demand. During the COVID-19 pandemic, ये जो भी डिमांड थी, किसी को कुछ खरीदना था या कुछ इन्वेस्ट करना था, most of the people they were not so eager to invest or eager to purchase, or I can say the bazaars were all closed. But ये डिमांड तो चलने लगी ना. That demand is known as pent up demand, when huge accumulated demand is released at one go. Got it? तो एक तो जैसे ही एक्सपोर्ट बंद हुआ, क्योंकि कॉन्टैक्ट सर्विसेज हमारे यहाँ खुल गए, तो डोमेस्टिक डिमांड जो है उसने एक्सपोर्ट डिमांड को रिप्लेस कर दिया पहला. और वो डिमांड कैसा था? पेंट अप डिमांड था. यू गेट दैट? पेंट अप डिमांड मींस दैट डिमांड व्हिच वाज सबड्यूड फॉर अ significant length of time has been suddenly released. And why that happened? Because of vaccination. Single reason. उससे बड़ा कोई रीजन नहीं है. If there is one major achievement of this government in the last 8 years, I will say that is vaccination drive. That is the biggest achievement of this government. Otherwise, Indian economy would have been in complete shambles. अब देखो, तीसरा क्या किया कि capex means you understand capital expenditure. Capital expenditure government ने बढ़ा दिया. If you look at the successive budgets, the total capex outlay has been increased significantly. And when government starts investing in infrastructure, obviously that improves the sentiments and it causes an effect called crowding in effect. Crowding in effect का मतलब क्या होता है? That as government creates roads, railways, etc., ports, etc. Are you aware about Sagarmala, Bharatmala? Are you aware about Udan? ये सारी चीजें करने लगे government. And when they started doing it, it improved sentiments and public capital was followed by private capital in infrastructure. Crowding in effect होने लग गया. अब देखो सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है, especially in an open market scenario, I'm not talking about controlled economies. In open market scenario, सरकार का काम है to be a facilitator. Do you understand that? And regulator to some extent, but not as a player in the economy. मतलब ये ऐसा है जैसे समझ कर देखो कि मैं ही रूल बनाता हूं, मैं ही अंपायर हूं और मैं बैट्समैन भी हूं. अब अपील करोगे तो मुझे ही करोगे ना, मैं बोलूंगा नॉट आउट. यू गेट दैट? तो ये नहीं होना चाहिए. इट इज अनफेयर कंपटीशन इन ओपन मार्केट सिनेरियोज. अब कंट्रोल्ड इकोनॉमीज है, सोशलिस्ट सेटअप्स हैं, तो फिर तो बात ही और. But in open market scenario, that has to be the way out. That government has to be facilitator and regulator. जैसे कुछ गलत ना हो, fair competition हो. For that we have organizations like Competition Commission of India, RBI, SEBI, TRAI, ये सब हैं regulators. And government should be facilitator. How to facilitate economic development? By creating infrastructure, physical, digital, and social infrastructure. You get that? So strong capex thrust जो हुआ है, आप देखो. और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं हुआ है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो एग्रीगेट है उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट हैज आल्सो गॉन अप. यू लुक फॉर द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, द कैपेक्स हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज. द ऑरेंज बार शोज द सेंट्रल कैपेक्स, whereas this blue bar shows the states capex aggregate. Do you understand that? तो स्टेट सारे इकट्ठा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फॉर दैट एवरी गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट शुड बी कंग्रेचुलेटेड बिकॉज दे हैव डन सम marvelous job with respect to overall capex infrastructure building. Anyhow, अब देखो कि इसके अलावा 3 और चीजें हुई हैं इंडिया में. फर्स्ट, buoyancy in direct taxes and GST collections. डायरेक्ट टैक्स इंडिया में इसका जो
ओवरऑल ITR फाइलिंग्स हैं ये बढ़ गया है. Why? Because digitization of the economy. पहले क्या होता था, याद है, हम मूवीज में देखा करते थे कि आज सैलरी है तो सारे खड़े होते थे, ऐसे पैसे रखे जाते थे टेबल पे और ऐसे दिए जाते थे. मोस्ट ऑफ द पेमेंट वाज इन कैश. बट अब तो मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, इन योर केस डेबिटेड. तो ऐसे ही मैसेजेस आते हैं ना फोन पे. तो इस फॉर्मलाइजेशन की वजह से अब टैक्स की चोरी जरा मुश्किल हो गई. गॉट इट. सेकंड इज जीएसटी. जीएसटी इज, इससे पहले जितने भी टैक्स थे दे वर ऑल ओरिजिन बेस्ड टैक्स, बट जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इट रिमूव्स द कैस्केडिंग इफेक्ट. राइट. सो टैक्स पेड एट वन लोकेशन is tax saved for somebody else. So GST and GST has caused the indirect tax and the direct tax, the formalization of the economy. They have increased the overall tax collection. आपको ताज्जुब होगा सुनकर, कोरोना में टैक्स कलेक्शन बढ़ गया. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया ओनली कंट्री है, एक्सेप्शन है. और नज थ्योरी ये गवर्नमेंट ने अप्लाई की. अभी नज थ्योरी जो है कई सारे इकोनॉमीज में हो चुका है, कई सारे गवर्नमेंट्स ने कर चुका है. तो द प्रेजेंट गवर्नमेंट आल्सो अप्लाइड दिस नज थ्योरी इन 2022-2023 दैट दे स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग पीपल हु पे टैक्स ऑन टाइम. हैव यू सीन दैट व्हाइल द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट? और देखो, एक टाइम के बाद सबसे पहले तो ठीक है, लोगों को थोड़ा पैसा चाहिए, फिर थोड़ा नाम चाहिए, और फिर उसके बाद सम्मान चाहिए. गॉट इट. सो दे, जब उनको लगता था कि देखो देखना इसका मेरा ही नाम आएगा, तो ये एक बिहेवियरल चेंज भी आया. एंड दोज पीपल हु वर नॉट पेइंग टैक्सेस, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उनकी तरफ से नोटिस जाता था. अब कई सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ने क्या कर दिया कि वो लोकल मोहल्ला में जाके वो रिलीज करते थे टैक्स पेयर्स का लिस्ट कि इस कॉलोनी में इन लोगों ने टैक्स भरा है टाइम पे. तो जिसका नाम नहीं है वो तो यही बोलेगा ना कि मैं तो कहीं और गया था, मैं नहीं भर पाया. Every time you want these kind of things. So these simple kinds of behavioral changes were also incorporated along with, but ये ज्यादा फैक्टर नहीं है इसका. सबसे ज्यादा फैक्टर है formalization and GST. Second is the growth in revenue expenditure has also been limited. Now in government's budget there are two kinds of expenditure. One is capex, the other one is revenue expenditure. Capital expenditure is always for the formation of something that will facilitate the production of goods and services or the flow of labor or money in the market. Do you get that? Or capital expenditure is something that will assist growth, whereas revenue expenditure is something which is for maintenance. Like say for example subsidies दे दिया, या समझ लो आप सैलरी बढ़ा दी लोगों की, बैठे बैठाए लोगों ने कुछ किया नहीं, बट सबको खुश करने के लिए ऐसा किया कि किसी की आप सबकी सैलरी में 100% जंप ऐसे अनाउंस कर दिया. ठीक है, गवर्नमेंट ने. दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं आ रहे. आप किसी की सैलरी अगर 100% बढ़ा दोगे तो आप ये बोल सकते हो कि अब 8 घंटे की जगह तुम 16 घंटे काम करोगे? नहीं हो सकता. यू गेट दैट? सो द ओवरऑल गुड्स एंड प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, दे रिमेन लिमिटेड, बट द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज. सो money spent on say salaries, money is spent on subsidies, all these kind of things, they do not add to production. Do you understand that? Sometimes subsidies also have a political angle. Keep this thing in mind, right? Whereas creating infrastructure, या समझ लो UPI वाला सिस्टम पता है आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बना दिया है गवर्नमेंट ने, और आपको पता है UPI में इंडिया ने रेवोल्यूशन कर दिया है और पूरी दुनिया में अब बात हो रही है इंडिया की कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं they are also using QR code, right? So India has done some exceptional work with respect to UPI infrastructure and it has given a lot of push to economic growth. So revenue expenditure जो था गवर्नमेंट का उसमें कमी हुई है, मतलब the rate of growth of revenue expenditure has come down. Revenue expenditure is day-to-day expenditure of the government. Capital expenditure is that expenditure that is for growth. That could be physical infrastructure, digital infrastructure or human infrastructure, anything. जैसे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? कैपिटल होगा. यू अंडरस्टैंड? हेल्थ में हो तो क्या होगा? कैपिटल होगा. अगेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैव पिक्ड अप, obviously the effects of crowding in.
So these three factors have also added to the strong economic growth in India. तो अभी आप ये देखो, ये चार्ट देखो, कैपेक्स डबल्ड इन द पास्ट 5 years. आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ये मत करने की कोशिश करना FY20 2.1 2.4 ये करने की कोशिश मत करना, कोई नहीं आ रहा, कभी नहीं आएगा, ठीक है. बट आप ये ट्रेंड तो याद रख सकते हो, ये बढ़ रहा है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अ बिट, थोड़ा नीचे गया था बट फिर अभी वो भी ऊपर आने लगा. buoyant tax collection, buoyancy means what? Floating, so it is rising. Do you understand that? And limited growth in revenue expenditure is growing but not growing at that rate. Do you get that? Now recovery by corporates, that's also a very big thing that is happening in India because of a rebound in demand, because of opening up of contact services. Corporates के balance sheet सारे ठीक हो गए. Now do you understand what is a balance sheet? Balance sheet has entries, 2 entries, in fact 3 entries. One is the asset column, one is the liability column, और उनका balance. Do you understand that? That's a balance sheet. So asset क्या है एक कंपनी के लिए? कंपनी का इन्वेस्टमेंट, नया फैक्ट्री खोल दिया, दैट्स एन एसेट फॉर द कंपनी बिकॉज एसेट इज समथिंग दैट हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम. गॉट इट? whereas liability is something that the company has to pay back. तो लोन्स वगैरह ये थोड़े कम हुए, और क्योंकि ये लोन लेकर बैठे हुए थे सारे कॉर्पोरेट लोन, डेट फाइनेंसिंग हो रही थी उस समय, एंड फ्रॉम वेयर दे वुड honor their debt obligations because they were selling nothing in the market because the markets were all closed. So इनकी बैलेंस शीट में जैसी रिकवरी आई, so obviously you know the board of directors decided let's invest. वही होगा, sentiments improve होने लगे कंपनी में. So the corporate sector, it showed recovery. You look here, Indian non-financial private sector debt and non-financial corporate debt as a share of GDP declined by nearly 30 percentage points. Debt कम होगा मतलब इन्वेस्टमेंट करने का चांसेस बनेगा. Such decline in debt limited the increase in interest costs. क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा उधारी है, then a lot of expenditure is meeting the interest expenditure, क्योंकि आपने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना आपको, तो वो भी कम हो गया. And this led to fortification of the corporate financial balance sheets. मतलब उनका सिचुएशन अच्छा होने लग गया. मतलब ऐसे सोच कर देख लो, इतने टेक्निकल भी ना समझ में आया तो, पहले वो बैंक से लोन ले रहे थे कोविड में, लेकिन कुछ बेच नहीं पा रहे थे, मार्केट सारे बंद थे. जैसे मार्केट खुल गया तो उनकी इनकम आने लगी तो वो थोड़ा थोड़ा उनका जो एसेट और लायबिलिटी का गैप था वो कम होने लग गया. जैसे वो कम हुआ उनके सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए तो उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया. मतलब देखो, जैसे कि अगर आपने एक रोड बनाया है या आपने एक फैक्ट्री लगानी है, अगर सरकार ने रोड बना दिया तो फैक्ट्री लगाना आसान हो जाएगा ना, because you know that now that road will be utilized by you to send your goods and services. But अगर सरकार ने रोड ही नहीं बनाया, पहले तो यही होता था इंडिया में, लोग क्यों चले जाते थे, इन्वेस्टर्स आते थे बाहर से इन्वेस्ट करने और इन्वेस्ट किए बिना चले जाते थे, ईस्ट एशिया में चले जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते थे, क्योंकि अगर आपको फैक्ट्री बनानी है तो आपको रोड भी बनाना पड़ेगा. अब कितने लोग जमशेद टाटा जैसे होंगे, स्टील प्लांट बनाया तो पूरा शहर ही बसा दिया, ऐसा तो नहीं होंगे ना सारे. He did it because he had a vision for the country and it is his country. But why an American will going to do that? और ऊपर से पता चला the new government which comes to power says that it was a deal with other government, now we nationalize it. तो उनकी तो बैंड बज जाएगी, आप समझ रहे हो. So that is what happened. Now look here, banking sector push. गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की. The scheme is known as ECLGS, Emergency Credit Linked Guarantee Scheme, MSMEs के लिए. Do you understand that? इसका मतलब ये हुआ, what is MSME? Yes. ये तो full form हुआ. What is MSME? That is full form. हाँ, what is turnover by the way? Turnover means what? Is turnover equals to revenue? Is turnover equals to profit? You understand what is revenue? Revenue means the total sales that were done by a company. That's its revenue. और उसमें जो भी costs minus कर दोगे, that would be profit. What is turnover?
Turnover means how many times the company invested in inventories, trade, logistics, sales, etc. टर्नओवर हमेशा ज्यादा होता है. या आप ऐसे सोच के देखो, जैसे आप पेज टर्नओवर करते हो ना, तो कंपनी के पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लेबर हो, कितनी बार उनको छेड़ा गया है कंपनी की तरफ से, मतलब उनको यूटिलाइज किया गया है, उसकी एक वैल्यू होगी. You add all those values, you get the turnover. Got it? That's the best definition for turnover. Turnover means that all the assets, all the infrastructure, all the sales, everything done by the company by incorporating everything. Capital, infrastructure, labor, इसका कितना यूज हुआ है, सबका एक वैल्यू होगा ना, सबको ऐड करो तो टर्नओवर हो जाएगा कंपनी का. बट एनी हाउ, सो देखो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि एमएसएमई को अगर आप लोन दोगे, MSMEs they are defined on the basis of their total turnover कि कितना है, ठीक है. So MSMEs को अगर आप लोन दोगे, then the government said that we will give a loan guarantee to the banks, public sector banks, that if you give loan to micro, medium and small enterprises, then if they default, we will repay. Now government is coming as a big brother for the MSMEs. जिससे MSMEs का भी सीना चौड़ा हो गया बिल्कुल बैंक के पास जाने के लिए. सबके पास कार्ड था गवर्नमेंट का गारंटी वाला. उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हमको ये गारंटी दे रही है, आपको हमको लोन देना है. और फॉर बैंक्स आल्सो देयर रिस्क केम डाउन बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट नाउ इफ द एमएसएमई इज डिफॉल्ट, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एनी हाउ रिकैपिटलाइज. गॉट इट? और अब जादू देखोगे कि 80% एमएसएमईज जिन्होंने ये लोन लिए थे, उन्होंने खुद ही भर दिए लोन अपने. तो कई बार क्या होता है लाइफ में, क्या चाहिए? सिर्फ एक गारंटी. जरूरी नहीं कि वो आप उसको अवेल करो, लेकिन चाहिए. अच्छा, व्हेन यू परचेज गुड्स, सपोज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एक मोबाइल खरीदा या कुछ खरीदा, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस हैबिट इन इंडिया टू आस्क व्हाट इज द गारंटी, वारंटी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. बट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गॉन फॉर दैट गारंटी, क्लेम दैट गारंटी और वारंटी? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैवंट. यू अंडरस्टैंड दैट? सो इट इज मोस्टली साइकोलॉजिकल इन नेचर. कीप दिस थिंग इन माइंड. और गवर्नमेंट ये साइकोलॉजी समझ गई. And thanks to some of the experts who are sitting in the finance ministry, investment bankers को इन्होंने लाया पहली बार, तो उन्होंने पूरा बिल्कुल चेंज ही कर दिया थॉट प्रोसेस. ब्यूरोक्रेटिक थॉट प्रोसेस था इससे पहले कि बहुत रूल बाउंड, थोड़ा रिस्क नहीं लेते थे. बट क्या हुआ कि देखो, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि हम गारंटी देते हैं, एमएसएमई अगर पैसा ना दे हम देंगे पैसा बैंक्स को, बैंक्स enlarged their loan basket. MSMEs got more loans, they got easy loans, they made profits. Why? Because MSMEs, they mostly deal in the contact services or contact goods. The bazaars were opened due to vaccination. They generated money, they repaid their loans. तो ये भी एक फैक्टर है, इंडिया ग्रो कर रहा है. एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. अब देखो, डू यू नो इन्फ्लेशन टारगेटिंग? नाउ देयर इज अ रेंज दैट आरबीआई हैज डिसाइडेड कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए और इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. व्हाट इज दैट रेंज? डू यू नो? 4 ± 2, ठीक है, या आप बोल लो 2 से लेकर 6 तक, ऐसा कोई एक रेंज है, ठीक है. But more appropriate would be 4 to 6. That would be a better range. Now, if the country's inflation goes beyond 6%, then obviously you know inflation is poor man's tax, because inflation hurts people with fixed income. Do you understand that? Because money loses value. जो सैलरीड पीपल हैं, they get hurt. इसलिए उनको क्या मिलता है? डीए मिलता है. Have you heard about that? Dearness allowance to counter inflation. But if inflation is too less, then it kills the incentive of the people to invest in the economy. Because when the prices of everything is falling down, suppose the price of this is falling down, so the manufacturers of this item, they would feel that why to invest in it? Got it? In this sector. And if everybody postpone their investments, the overall goods and services produced will go down, and the money value of overall goods produced and services provided within the domestic boundaries of an economy across an year is GDP. So GDP will come down. Do you get that? So inflation इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए that the vulnerable sections get hurt. इतना कम भी नहीं होना चाहिए that the investors, they are disincentivized. Correct? और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, अगर आप देखोगे, वो 6.8% के आसपास रहा है, and it will come down. Why? Because the global supply chains have yet not been reinstalled.
Russia-Ukraine conflict, that will end, right? We are hopeful that will end. Depends everything on Putin. And the second thing is China's zero COVID policy. ये भी रिवर्स होगा, आज नहीं हो रहा है लेकिन इन्होंने किया ना वन चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स, तो ये भी करेंगे, ये जीरो कोविड पॉलिसी को रिवर्स। और जैसे ही ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से बन जाएगा तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, वो कम होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। नाउ यू टेल मी वन थिंग, वट एवर वी हैव कवर्ड इन द क्लास सो फार, आर यू क्लियर विद एवरीथिंग? वेरी गुड। चलो, इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि इंडिया में ग्रोथ इंक्लूसिव भी रही है। नाउ दैट्स अ गुड थिंग। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स व्हाट? Growth is inclusive when it creates jobs, when it spills across all sectors, and when it causes equitable distribution of income. It means those who have contributed towards the growth, they must also reap the fruits of that growth. Like say for example, and this is equitable distribution, not equal distribution. Equal distribution can be unfair. Keep this in mind. Equitable distribution is more fair. Like say for example, two people started a venture. One invested 1 lakh rupee, the other one invested 1000 rupee, or suppose 50,000 rupee. Now the total output was say 2 lakh rupees. Now should I divide it 1 lakh to both the investors? That would be equal distribution. That would be unfair. You understand that? Rather, I should give more money to the person who has invested 1 lakh and less money in proportion to his investment. That is equitable distribution. So growth is inclusive when it creates jobs, ये बात याद रखना, when it spills across all sectors, agriculture में भी होना चाहिए, industry में भी होना चाहिए, trade में भी होना चाहिए, services में भी होना चाहिए, and it causes equitable distribution of income. Got it? तो देखते हैं इंडिया के inclusive growth की story. Employment levels बढ़े हैं इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 15 ईयर्स से ज़्यादा जो होता है ना, जिसमें जो कैलकुलेट करते हैं 15 to 59 मोस्टली, दैट इज द वर्किंग पॉपुलेशन, 7.2% है क्वार्टर 2 में 2023 के फिस्कल ईयर के फाइनेंशियल ईयर के। पहले ये 9.8% था। अब फिर अगेन यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दीज परसेंटेजेस, बट ओनली यू हैव टू रिमेंबर दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज कम डाउन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? व्हेन देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन, दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट? स्टैगफ्लेशन। Got it? Labor force participation rate or ratio, it's a great indicator of how inclusive the economy is. Now there could be a question, which of the following highlight towards inclusive growth? उसमें ये हो सकता है. Do you understand that? And especially female labor participation, that is a great indicator of how inclusive the economy is. तो अगर आप देखोगे, it has also improved. Exports surge, exports have increased. Strong release of pent up demand, I hope you understand that term now, and a swift rollout of capex. It means capital expenditure by government. Which government? Central and state governments. All state governments aggregate. Emergency credit line guarantee scheme or linked credit guarantee scheme. This is for MSMEs. So MSMEs create jobs for whom? For the very highly skilled or semi-skilled, unskilled mostly. So that is inclusiveness or not? Then you see. CIBIL report showed that 83% of borrowers availing ECLGS are micro enterprises. मतलब एकदम ही छोटे. And micro enterprises must be creating more jobs. Do you understand that? See, there are very few number of very large companies, but there are very large number of small companies. Smaller the company, greater is their number. Got it? So inclusiveness वहां से भी हो जाती है. Financial resilience of small businesses and effectiveness of preemptive government initiatives, MSMEs, वो GST VST इन्होंने भरा है तो उससे भी पता लगता है. नरेगा, you know, नरेगा created assets. Priorly कैसे एसेट बनाते थे? पब्लिक लैंड पे बनाते थे, बट इस बार गवर्नमेंट ने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है. उन्हें कहा है कि जो एसेट बनेंगे वो प्राइवेट लैंड पे बनेंगे. मतलब पहले क्या होता था कि जैसे गांव में है, समझ लो, आर यू अवेयर अबाउट नरेगा स्कीम? इट गिव्स 100 days guaranteed employment, especially during the non-agricultural season. तो देखो, पहले ऐसा होता था कि कॉमन लैंड जो गांव का होता था उस पे एसेट्स बनाते थे. टैंक बना दिया, कैनाल बना दिया या कुछ बना दिया, from which the community benefited. But this time there was a new policy which was adopted under Narega, that we will create assets on the private land of people.
इट मीन्स घर के अंदर वो बना रहे हैं एसेट्स, यू अंडरस्टैंड दैट. सो इन दिस वे पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड, और उन्हीं को दे दो जिम्मेदारी कि आपके घर में ही बनाना है. सो दे वुड क्रिएट बेटर एसेट्स, यू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ह्यूमन साइकी इज लाइक दैट, राइट. एंड सेकेंडली it will diversify their income. Like say for example a tank has been created in that which you can say आप fishes वो कर सकते हो, fishery कर सकते हो, and that will add to your overall income. Correct. Then PM Kisan and PM Garib Kalyan Anna Yojana. What is PM Kisan? 6,000 rupees given to farmers, and Garib Kalyan Anna is highly subsidized or free grains. Do you understand that? To the most vulnerable sections of the population. तो देखो एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ वेलफेयरिज्म. Do you get that? It's a great combination. और इस कॉम्बिनेशन के साथ ग्रोथ आपको मिलेगी, क्योंकि देखो ग्रोथ दो तरीके से होती है. एक कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ. It means people demand for goods and services in the market, and that's why people produce more goods and services, and therefore the economy grows. The second one is investment led growth. Investment led growth means the company invests in the economy, or the government invests in the economy, and by investing they create jobs. As they create jobs, they increase incomes. As they increase income, they increase demand, and therefore there is more goods and services produced, and therefore the GDP grows forward. Do you understand that? So economies are either consumption based or investment led, or consumption driven and investment led. Can you give an example of consumption driven economy? India. India is a consumption driven economy, but in consumption driven economies also there could be some investments. Can you give an example of investment led economy? China. China is an investment led economy. Do you understand that? What about US? Consumption based again. Anyhow, तो दोनों को वो कर दो. तो इस पे जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे होंगे, मतलब सॉरी खाने के लिए पैसे नहीं है और गवर्नमेंट उसको खाना दे रही है, तो उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है उससे वो कुछ तो डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में. डू यू गेट दैट? एंड पीएम किसान ऑब्वियसली विथ गरीब कल्याण, पीएम किसान ऑगमेंट्स इनकम. सो इट्स लाइक सी मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज वर कॉमन बेनिफिशियरीज ऑफ दिस. वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स. आर यू अवेयर अबाउट दैट? सो इट मीन्स आपको फ्री राशन भी मिल रहा है प्लस कुछ पैसे भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट से. So you can create some demand in the market. National Family Health Survey, it also shows therefore because of these initiatives that there is improved rural welfare indicators. Rural welfare indicators क्या हो सकते हैं? आप देखो gender हो गया, fertility rate हो गया, TFR, are you aware about that? Total fertility ratio, household amenities हो गए क्योंकि नरेगा के अंडर बन रहे थे बहुत सारे assets, and women empowerment. So all these things happened. Now urban unemployment rate of at 4-year low, मतलब पिछले 4 साल में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है अभी 7.2%. Then you see GST paid by MSMEs, that is also increasing. ECLGS aided MSMEs in improving their asset quality, that is also improving. और इसमें डेफिनेशन भी दिया हुआ है, जैसे माइक्रो है तो टर्नओवर इज लेस देन 25 करोड़, स्मॉल है 25 to 100 करोड़, मीडियम है तो 100 to 1000 करोड़. Now look at improvement in rural welfare indicators. फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पिछला वाला 16 में हुआ था, अभी 25 साल में एक बार होता है. नाउ यू सी, यू लुक एट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर स्टंटेड. स्टंटेड मींस हाइट फॉर देयर एज इज लेस. करेक्ट? प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर वेस्टेड, इट मींस वेट फॉर देयर एज इज लेस. एंड प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट. करेक्ट? तो ये मालनरिशमेंट का भी है एक इंडिकेटर. Now outlook of Indian economy in financial year 24. जब हम बजट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. Correct? Now look here. India third largest economy in terms of PPP and fifth largest in terms of absolute exchange rate. Correct? That is one thing that you have to keep in mind. Now look here. It's a beautiful line. FY23 has nearly recouped what was lost. Recouped matlab regained what was lost. Renewed what was paused. Do you understand that? Like say for example, goods production, trade, and re-energized what had slowed, like capital, infrastructure. Correct? तो ये लाइन, अगर ऐसी लाइन आप लिख सकते हो अपने मेंस एग्जामिनेशन में, then obviously it will fetch a lot of marks, especially in conclusion.
Anyhow, India recovered quickly from the pandemic and growth in upcoming year will be supported by solid domestic demand and a pickup in capital investment. That is what is expected. The second decade of this millennium witnessed financial system stress due to excessive lending in first decade, evidenced by rising NPAs, low credit growth and declining growth rates of capital formation. मतलब अब चीजें सही हो रही है, बस कुल मिलाकर ये समझ लो. और ये देखो जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2.7x टाइम्स ग्रो हुआ in the last 7 years. And this I am saying not only of central government but all the state governments in aggregate. It's a great thing. Structural reforms like GST and enhance the efficiency and transparency of the economy. ठीक है, ये आप देख लो. India's outlook remains bright. Insolvency and bankruptcy code that has also helped in easy exit from the economy. Now forecast क्या है देखो, जो ग्लोबल ग्रोथ का है वो है 3.2 to 2.7 in 2023. तो हमने पहले भी देखा there is slowdown in global growth. इंडिया में भी हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन आए, लेकिन स्टिल इंडिया इज पोइज्ड टू ग्रो एट समवेयर अराउंड 6.5 to 7%, right? It could be growing as over than that as well. Depends upon how the situation pans out, Russia, Ukraine especially. Current account deficit तो है इंडिया में अभी, लेकिन उससे कुछ फायदा भी हुआ है. And thanks to the vision of the External Affairs Minister, he said that we are going to purchase oil from Russia. और हमने क्या किया है, ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना लिए हैं. व्हाट इज ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स? ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मींस एक्यूमुलेटिंग ऑयल. यू गेट दैट? तो कई सारे ऐसे रिजर्व्स हमने बना लिए हैं कई जगहों पर कि अभी अगर एक ऑयल क्राइसिस आती भी है तो भी हमारे पास 3-4 महीने का ऑयल तो होगा. एंड यू नो इफ देयर इज नो ऑयल देयर वुड बी नो व्हीकल्स ऑन द रोड, एंड इफ देयर इज नो व्हीकल्स ऑब्वियसली पीपल विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव. एंड इफ पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव, हाउ वुड दे परफॉर्म देयर सर्विसेज? एंड सर्विसेज सेक्टर इज ऑलवेज one sector which gives a quantum jump to output because they are high paying sectors, big ticket entrepreneurs. They are all service entrepreneurs. Now look here, upsides to Indian growth. Upsides matlab positives. Limited health and economic fallout. क्योंकि अभी कोविड आ भी रहा है तो हमको उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं हो रही है, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन से हो ही रहा है धीरे धीरे. Inflationary impulses from the reopening of China's economy turning out to be neither significant nor persistent. मतलब चाइना ओपन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उससे इन्फ्लेशन उतना नहीं आ रहा है इंडिया में, राइट? चाइना के ओपन होने से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का क्या लेना देना? चाइना ऑयल खरीदता है, यू अंडरस्टैंड दैट? तो एक बिग बायर है चाइना, लाइक इंडिया. तो जब वो ज्यादा पैसे देगा, then the Gulf countries will also have more money from us. And in that way, our purchases will also go up. Then recessionary tendencies in major advanced economic societies triggering a cessation of monetary tightening and a return to capital flows to India. धीरे धीरे उनका monetary easing हो रहा है अभी. That's why the capitals have started flowing, and improvement in animal spirit. The conclusion is, in this backdrop, the economic survey projects a baseline GDP growth of 6.5% in real terms. Real terms means adjusted to inflation. In 24, fiscal year 24, it means 23-24, the actual outcome for real GDP growth will probably lie in the range of 6 to 6.8%, depending on the trajectory of economic and political developments globally. Got it? With that, we end the first chapter. अब first chapter को समझाने में मैंने इसलिए इतना time लिया आपको because it sets the tone for rest of the survey. Got it? So we have around 10 minutes to go. If you people give me 10 more minutes, we'll cover the second chapter as well. Are you willing to go for it? Okay. So let's take a look at the second chapter. India's medium-term growth outlook with optimism and hope. देखो, इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं. In the last 10 years, there are a number of reforms that have taken place. Reforms started in India with 1991. देखो, पिछले चैप्टर में हम क्राइसिस की बात कर रहे थे, अब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं. Got it? So in 1991, the LPG reform happened in India, and after that, there were a string of reforms that were carried out in India, especially the time period between 1998 and 2002. जैसे आपने ये सुना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कैसे, और अभी पिछले 5-6 साल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म. इवन टुडे यू सी दैट वंदे भारत इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री.
So there is a huge emphasis on infrastructure. Now the second chapter is generally talking about these reforms that has happened in India in the last few years and what reforms are happening now in the last 5 to 6 years, how things have improved in India with respect to capex expenditure. Do you understand that? Or capital expenditure. So देखो, Indian economy has undergone a transformative process of new age reforms in the last 8 years. These diverse policies converge towards improving the economy's overall efficiency and lifting its potential growth. These reforms aimed at enhancing the ease of living and doing business at the fundamental level. अब एक चीज देखो, गवर्नमेंट का काम मैंने आपको बोला था क्या है, मोस्टली ओपन मार्केट में फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर टू सम एक्सटेंट, एंड द एम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी टू प्रोवाइड an avenue where there is fair competition between different players in the sector. But government should also focus on something that is ease of doing business. Fair तो है competition, लेकिन सबके लिए बहुत troublesome processes है. सबके लिए बराबर है लेकिन बहुत troublesome. Why? Because you see that for several years it was people from the bureaucracy who decided, who took economic decisions. और ब्यूरोक्रेसी को अनफॉर्चुनेटली ऐसे ट्रेन किया गया था कि दे आर ऑलवेज दे आर इनगल्व्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ प्रोसीजर्स. बहुत अच्छा लगता है फाइल वर्क करना, ठीक है, नोट्स बनाते बनाते ऐसे ही हो जाते हैं, इनको फाइल वर्क करना बड़ा अच्छा लगता है. बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज समथिंग. अच्छा एक बात बताओ, आर यू अवेयर अबाउट द IRCTC? उसके आने के बाद कितने बहुत कम ही लोग होंगे जो स्टेशन पे जाते हैं अब टिकट करने के लिए अपना. यू अंडरस्टैंड दैट? नहीं तो उससे पहले तो ऐसा ही होता था कि सुबह 4 बजे पहुंच गए, काउंटर खोलने से पहले होता था ना ऐसे ही. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मीन्स कटिंग डाउन ऑन रेड टेपिज्म. तो एंट्री बहुत आसान है, कंडक्शन ऑफ बिजनेस बहुत आसान है, और अगर आप फेल हो जाते हो, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस फेल, सो देयर इज ऑल्सो ऑनरेबल एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम. इफ यू डू नॉट अलाउ एन ऑनरेबल एग्जिट, अगर आप बोलोगे कि नहीं आप आ तो गए हो, इंडिया में पहले ऐसा ही होता था कि आपने फैक्ट्री लगा दी, एक तो लगाने में इतना आपको इस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट घूम घूम के आपने फैक्ट्री लगाई जैसे तैसे, और फैक्ट्री भी लगा दी आपने, आप समझ लो अब आप काम करना चाहते हो तो पता चला स्ट्राइक हो गया, एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज, लेबर कंप्लायंसेस व्हिच यू हैव टू फॉलो. अब क्या हुआ कि आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हो सकता मेरा बिजनेस, मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो क्लोज भी नहीं करने देते थे. दिस इज नोन एज द चक्रव्यूह प्रॉब्लम. आर यू अवेयर अबाउट दैट? चक्रव्यूह, लाइक यू कैन एंटर इट बट यू कैन नॉट लीव द सिस्टम. ये प्रॉब्लम था इंडिया में. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे कॉल्ड इट चक्रव्यूह प्रॉब्लम. दिस इज नॉट माय टर्म. सो ये चीज हो गया. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ एक और चीज होती है, ईज ऑफ लिविंग. Now what is ease of living? Ease of living means for customers, it has to be a hassle-free experience when they are going into the market to avail goods and services. Like say for example, कुछ सालों पहले अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी होती थी समझ लो, तो बहुत दिन लगते थे आपको, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, पेपर्स आ रहे हैं, नंबर प्लेट ही नहीं है, आप क्या करोगे उस गाड़ी का. बट अब बहुत जल्दी जल्दी होता है चीजें. So if that happens, don't you think that will give a big push to the automobile demand, overall demand, and that will give a push to automobile sector, and automobile sector creates large number of jobs by creating forward and backward linkages. Got it? So look here, the use of technology, especially digital technology, undergirds the reforms. It means जो भी reform हुए हैं mostly कुछ सालों में, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है. अब आप देखो, लाइक मोस्ट ऑफ अस यूज UPI पेमेंट इंटरफेस नाउ, और इससे एक कैशलेस की तरफ हम जा रहे हैं. ओवरऑल इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन. नाउ कैशलेस मींस लेस कैश, नॉट नो कैश. यू अंडरस्टैंड दैट? दैट इज कैशलेस. तो ये दिस चैप्टर डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स over the previous 3 decades. Product market means goods and services market. Capital market means mostly share market. Got it? तो पहला जो है वो 1991 LPG reforms है. I'm not going to read all these things for you, but in a nutshell I'll tell you 1991 में क्या हुआ. उससे पहले जो भी policies हम कर रहे थे, especially the socialist hangover, that created
unsustainable financial position in the country. Our import cover was only for 15 days. अभी जैसे पाकिस्तान के पास 1 महीने का इंपोर्ट का पैसा बचा है ना, हमारे पास 15 दिन का था. सोचो, एंड लुक एट पाकिस्तान, लुक एट आवर साइज, द नंबर ऑफ पीपल. सो बीओपी क्राइसिस हो गई थी हमारे यहाँ, और ये वही हुआ था बिकॉज वी वेर नॉट एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन द कंट्री. देयर वाज रेड टेपिज्म, देयर वाज लाइसेंसिंग कल्चर, इंस्पेक्टर राज, ये सब सुना है, ये सब चलता था. बिजनेस, डूइंग बिजनेस वाज टीडियस इन द कंट्री. मोस्टली लोग यहाँ से बाहर जाके यूएस में सेटल हो जाते थे, वहाँ बिजनेस करते थे, बट यहाँ नहीं करते थे. एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन नेशनलाइजेशन. कोई इंडस्ट्री जैसी थोड़ा अच्छा करती थी, नेशनलाइज कर देते थे. बिग एग्जाम्पल वाज एयर इंडिया. एयर इंडिया, टाटा स्टार्टेड देम. व्हेन इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग, गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड इट, और जब खुद से फेल हो गए तो वापस दे दिया. डू यू गेट दैट? सो इट क्रिएट्स अ वेरी, इट गिव्स अ वेरी बैड सिग्नल टू इन्वेस्टर्स इन द इकोनॉमी. तो ये सब कुछ हुआ. बट इन 1991 गुड सेंस प्रिवेल्ड, and that too because of Dr. Manmohan Singh, his vision. He at that time was the finance minister, and PV Narasimha Rao. So you see that this is what was done. Trade and investment were liberalized, means now people can do export import very frequently, and also investments can come in, foreign investments into the country. Import licensing on almost all intermediate inputs and capital goods was done away with, and the entry restrictions for firms were simplified. Capital goods क्या होते हैं? Machines. पहले फैक्ट्री अगर आपको लगानी होती थी, आपको मशीन तो इंस्टॉल करना होता था ना. Most of these machines were made in US or in UK, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा. यूरोप से ही आता था, या ऑस्ट्रेलिया से कुछ अगर आ गया तो. हमारे यहाँ कहाँ कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर होता था? जो भी पैसा था उससे हम कंज्यूमर गुड्स ही बनाते थे मोस्टली. दैट टू FMCG. आर यू अवेयर अबाउट दैट? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. New policy encouraged the entry of private sector firms by ending the public sector monopoly in many sectors and initiating the automatic approval route for FDI up to 51%. इससे पहले क्या होता था? ऑटोमेटिक रूट नहीं था, एक अप्रूवल रूट था. उस पे एक नेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ऐसा एक बोर्ड हुआ करता था. आप पैसा लेकर आ रहे हो, समझ लो आप फिलाडेल्फिया से आते हो और यहाँ पे आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ फैक्ट्री, ऑब्वियसली यू विल क्रिएट जॉब्स एंड ऑल अदर थिंग्स. बट जैसे ही आप आते थे कंट्री में, तो एक बोर्ड बैठ जाता था, उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स. वो डिसाइड करते थे कि अब आपको परमिशन दी जाए या ना दी जाए. तो ऐसा स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तो ठीक है, बट नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में करने का क्या मतलब? व्हाट आर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स? Defense, atomic space, these are strategic sectors. Agriculture also to some extent is strategic sector in India. But non-strategic sectors में तो हो सकता था. ये automatic route, इसकी बहुत दिनों से डिमांड थी. बट इंडिया में एक क्या बोलना चाहिए आपको, एक सोच ऐसी चल रही थी कि फॉरेन कंपनी आएगी तो फिर से कंट्री को गुलाम बना देगी, कि दे हैड द एक्सपीरियंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. बट ऐसा होता नहीं है. तब उस समय नेशन स्टेट थोड़ी ना था. यू अंडरस्टैंड दैट? इट वाज नेशन बट नॉट अ नेशन स्टेट. ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट अब तो है. The exchange rate was made flexible and allowed to depreciate as necessary to maintain competitiveness. Now there are two types of competitiveness: quality competitiveness and price competitiveness. And exchange rate is a big indicator of competitiveness of a currency. Do you get that? पहले कैसे होता था आपको पता है? $2 पे $1 मिलता था, जबकि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत कम थी. How people gain interest or how people gain kind of respect for a particular currency by looking at the economy of that country. Now Pakistani rupees, there is some 260 per dollar, right? अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है ना. अभी अगर वो बोलते हैं कि नहीं एक पाकिस्तानी रुपए पे $4 मिलेगा, तो आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट लेने वाला है उस पर? कोई नहीं लेगा. सो फ्रीली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आया सबसे पहले, सॉरी एक्सचेंज रेट आया इंडिया में आफ्टर 1991. उससे पहले आरबीआई तय करती थी कि रुपए के मुकाबले कितने डॉलर्स होंगे. इट मींस दैट वाज नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. बट देन नाउ वी हैव फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. बट ऑब्वियसली आरबीआई कम्स इन, इंटरवीन्स व्हेनेवर द रुपी डिप्रिशिएट्स वेरी ग्रेटली, राइट? क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो उतना हम कर सकते हैं. द रुपी वाज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में पार्शियली कन्वर्टेबल किया था. मतलब आप पैसा लेकर आओगे, समझ लो कैपिटल अकाउंट में एफडीआई आता है. सपोज यू आर ब्रिंगिंग इन $3,000, बट यू कैन नॉट टेक ऑल द $3,000 द नेक्स्ट डे.
You cannot do that, right? In India, you can take that money out, but with a lag, and that is necessary because rupee is not a hard currency. अगर hard currency बन जाए तो फिर क्या टेंशन है, forex reserves ही नहीं रखना पड़ेगा. Now look here, the result was real growth went up from an average 5.5% during the 80s to 6.3% during financial year 93. बिल्कुल से देखने को मिल गया था हमको. GDP rose from 17.2% in 1990 to 30.6% in 2000. Like the Asian tiger story or the East Asian tiger story, you go to any good university where economics is taught all over the world, Indian economy, how it recovered in 1991 is a magical story. हर जगह पे पढ़ाया जाता है. It's a case study क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा resilience दिखाया उस वक्त and we averted everything. 2020 वाला भी अभी देख लो. See, एक चीज़ है, I understand our country has so many problems like illiteracy, poverty, low income, etc. But Indians में एक चीज़ तो है for which Indians should be credited. They are very brave people. आपने देखा नहीं है कि बाहर लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, अगर थोड़ा भी वो हो जाए. यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर पूरा भी खाली रहे फिर भी घूमते हैं इतना चौड़ा करके. वी आर वेरी ब्रेव पीपल, यू अंडरस्टैंड दैट. तुमको टेंशन नहीं होती. जब 1991 का ये क्राइसिस चल रहा था तो आप समझ सकते हो कि लोग गाना वाना गा रहे थे और मतलब क्या बोलूं मैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये सब बन रहा था कंट्री में. यहाँ 1991 का ग्लोबल क्राइसिस है, आप समझ सकते हो. कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको. इंडियंस आर वेरी गुड इन दैट स्टेट. दूसरा, द रिफॉर्म्स दैट वर कैरिड ऑन बिटवीन 1998 2002. Now what were these reforms? First, the new telecom policy, and I think that was a groundbreaking policy which allowed private sector to participate in telecom. ये तो पहले तो ऐसा ही होता था कि शुरू में मोबाइल आया था. So I remember, incoming के भी पैसे लगते थे, right? And there was only one operator which is BSNL, मतलब वही कि जो अंपायर वही प्लेयर. और BSNL का नाम भी लोग बोलते थे भीतर से नहीं लगता, मतलब घर के अंदर से नहीं लगता था उसका कॉल, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था. और गवर्नमेंट अगर मोबाइल टेलीफोनी पे इन्वेस्ट कर दे तो सोचो पार्लियामेंट में कितना जवाब देना पड़ेगा. एग्रीकल्चर, कितने लोगों के पास मोबाइल था उस वक्त. सो इट वाज नेसेसरी टू डीरेगुलेट दैट सेक्टर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसी. और एक रेगुलेटर बना दिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट्स बिजनेस इज टू क्रिएट रेगुलेटर्स and be facilitators. So that was a good move at that time. Policy was envisaged by the then Prime Minister, Honorable Atal Bihari Vajpayee ji. Policy on disinvestment and privatization, इसके लिए dedicated ministry बनाई गई. Got it? ये ministry बनी कि अब disinvest करेंगे. पहले क्या होता था कि suppose एक factory सरकार के पास है और आपने सुना है ऐसे ONGC या ये इस तरीके के जो भी थे, ठीक है, ये सब सरकार रखी रहती थी. एंड मोस्ट ऑफ देम टर्न सिक. व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ लेबर एक्टिविज्म, समटाइम्स अननेसेसरी लेबर एक्टिविज्म, राइट? बिकॉज दे वर मोस्टली इंस्पायर्ड बाय द सोवियत मॉडल. तो वो लेबर एक्टिविज्म इतना करते थे दैट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स वर वेरी फ्रीक्वेंट इन दीज फैक्ट्रीज. सो देयर प्रोडक्टिविटी केम डाउन. Government kept on capitalizing them, but their productivity came down. जो बना भी रहे थे, they were losing edge in the market, but government kept on holding to them. But then government decided that those non-performing entities should be privatized, if not in one go, but in a sequential manner. जैसे बाल्को को किया, ONGC विदेश को किया, बहुत सारे को डिसइन्वेस्टमेंट करने को, और एक स्पेशल मिनिस्ट्री भी बनाई गई, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम. आज वो वही करता है, ठीक है. वो जो भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसकी वो देखता है अच्छे से. अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट करने के फायदे देखो. पहला, फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए कुछ अमाउंट मिल जाता है, पैसा मिल जाता है सरकार को. सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर नाउ गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अफ्रेश. एंड जो कैपिटल चोक्ड था
सिक इंडस्ट्री के पास, वो रिलीज हो जाता है मार्केट में इमीडिएटली, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे जिनके पास बहुत सारा लैंड था. Now that land was not put to any use. So if you privatize it, especially the non-core activities, और ये रेलवे को भी करना चाहिए, because you see everywhere you go and see Indian railways, आपको रेलवे का स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. अब रेलवे का काम स्कूल हॉस्पिटल बनाना थोड़ी ना है, थोड़ा CSR कर सकते हैं वो, बट रेलवे का काम है रेलवे को इंप्रूव करना. ठीक है, अब आप स्टेशन में जाके देखो, go to New Delhi railway station, go to a metro station, Karol Bagh metro station, and you'll see the difference. Do you understand that? This is run on corporate lines, whereas that is still age-old system. तो आपको पता भी चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे में जाने से लगता था कि अब मैं बीमार हूं, ऐसे लगता था ना. There was no cleanliness, nothing like that. So this disinvestment must be done. So that was done, a dedicated ministry. Then golden quadrilateral. Now that gave a big push because I feel that created the environment of big infrastructure projects. It was the first of them. Golden quadrilateral, are you aware about that? Joining all the major four cities. Then there is diamond quadrilateral, dedicated freight corridor, then Sagarmala, Bharatmala. आज हम जिसकी भी बात करते हैं, Bharatmala is for roads, Sagarmala is for ports, right? Udan, उड़े देश का आम नागरिक, all these kind of things. Then there was this Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act, FRBM 2003. इसमें क्या होता था कि government used to show deficit after borrowing from RBI. 2003 से पहले ऐसे होता था, जैसे कि समझ लो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है, उसमें रेवेन्यू ऑन द बाय डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज एंड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी हो, टोटल रेवेन्यू समझ लो 100 रुपए गवर्नमेंट का, और टोटल एक्सपेंडिचर है 120 रुपए, तो डेफिसिट कितना हुआ? 20 रुपए. डू यू अंडरस्टैंड दैट? 20 rupees इज द डेफिसिट. व्हाट गवर्नमेंट यूज्ड टू डू इज गवर्नमेंट यूज्ड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई. Say 10 rupees is borrowed from RBI. Now they are already financed 10 rupee out of the 20 rupee. Now they show in the parliament that our deficit is 10 rupee. But their real deficit was 20 rupees. Do you understand that? And government used to call it deficit financing. या budget financing. ऐसे बोला जाता था. A committee was appointed by the then government under Sukhmoy Chakravarti, the famous economist. Sukhmoy Chakravarti read entire thing and said, this is fraud on the people of India. आप जितना deficit है वो बताओ ना. And FRBM was passed, Fiscal Responsibility and Budgetary Management. The idea was to make revenue deficit to zero, fiscal deficit 3% of GDP, all those kind of things, right? Several targets were. अब ये अलग बात है कि FRBM के targets नहीं reach हुए. Why? Because 2003 and 2008 subprime crisis. Remember? So that was a jolt. Anyhow. Then came the Surface Act. अब इस Surface Act क्या है? देखो, Securitization and Reconstructions of Financial Assets, Securities Interest Act ऐसा है. तो इसमें क्या होता था? पहले समझ लो बैंक ने लोन दिया. सोच कर देखो कैसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. आपने बैंक से लोन लिया है टू परचेज हाउस. अब आपने वो लोन लेके अपना घर भी बना लिया. अब आप लोन नहीं दे रहे वापस, बैंक डिफॉल्ट कर गए हैं. ठीक है. नाउ बैंक्स रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू यू, यू से आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न द लोन, चाहो जो करना है कर लो. यू गेट दैट? नाउ बैंक्स हैड वन ऑप्शन, दे हैड टू गो टू कोर्ट्स, एंड थ्रू कोर्ट्स द इशू वाज सेटल्ड. नाउ व्हाट डू यू थिंक, इंडियन जुडिशरी इज ओवरबर्डन्ड और नॉट? हाईली ओवरबर्डन्ड. और केस का तो अपील भी हो सकता है ना. सरफेसी एक्ट में ये बोला गया कि बैंक्स अपनी रिकवरी खुद करेंगे. मतलब समझ में आ गया? तो एसेट उन्होंने लिंक करना शुरू कर दिया. तो अब जब होम लोन दिया जाता है आपको, या कार लोन दिया जाता है, या कोई भी लोन दिया जाता है, तो उसमें पैसे लिंक्ड होता है. पहले वो आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे. लाइक सपोज यू मिस योर EMIs, suppose you miss your 5 EMIs, and if you go to the bank and you tell them that because of these circumstances I missed my EMIs, if those circumstances are genuine, then there is some buffer fund which the government has created, which will finance you, you will finance the bank, and you will again refinance the buffer fund. ऐसा ही होगा आगे चल के. बट अगर ऐसा कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, मतलब आपके पास, तो कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास पैसा है लेकिन देने का मन नहीं करता, होता है ना.
वो लोग सारे सीधे हो गए सरफेसी से। Anyhow, shocks that overshadowed the reforms 1998-2002। ग्रोथ क्यों नहीं हुई उतनी? क्योंकि देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिया इंडिया पे। इंडिया डिड न्यूक्लियर टेस्ट्स, that is when Dr. Kalam became a national hero overnight. Then period of 2002 also witnessed two successive droughts, and then there was the end of the tech boom। अच्छा आपको पता है 2000 में एक वायरस आ गया था Y2K, अवेयर अबाउट दैट? अच्छा ऐसे सोच के देखो, एक कंप्यूटर वायरस आया था 2000 में which broke the entire financial infrastructure all across US। कि ऐसा होता था कि आप उस समय एटीएम कार्ड्स चलते थे, आप पैसे निकाले एटीएम मशीन से, पैसा आपको मिल गया लेकिन डेबिट नहीं हो रहा आपके अकाउंट में। मतलब बहुत अच्छा सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज देयर वाज अ फ्लॉ इन द सॉफ्टवेयर because of Y2K virus, that is known as the technology bust। So when we were growing up, this computer science and information technology boom that started, right? So IT boom इतना था कि सबको जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते थे सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए था, सबको आईटी चाहिए था। अभी भी पता नहीं मुझे क्या सीन, अभी भी लगता है वही सीन है, बट कंप्यूटर साइंस उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच था, ठीक है। आईआईटी में भी सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, और हर जगह कंप्यूटर साइंस सबसे पहले जाता था। बट एनीहाउ, सो these were the reasons why the 1998-2002 reforms were not so successful। Then India's participation in the global boom of 2003-2008, वो मैंने आपको बताया बीपीओ कल्चर वाला जो इंडिया को जिससे गेन मिला। 5 factors contributed to this growth story। क्या था? Sustained momentum in domestic economic activity because of reforms 1991। Second, better corporate performance because there was liberalization, privatization, etc. A conducive investment climate, remember liberalized of trade and investment under 1991। Positive sentiments for India as a preferred investment destination। जब जैसे हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ने अगले दिन ही न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो सैंक्शंस तो दोनों पे लगे, इंडिया पे भी लगे, पाकिस्तान पे भी लगे, बट वी शोकेस्ड आवरसेल्व्स एज अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। कभी नहीं आप सुनोगे इंडिया के किसी मिनिस्टर को, कोई भी गवर्नमेंट का हो, प्रेजेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट का, कोई भी, वेरी लूजली दे टॉक अबाउट वी विल फायर अ न्यूक्लियर वेपन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऑन पाकिस्तान एवरी डे। बट पाकिस्तान में तो रोज बोलते हैं, वो रोज कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, रोज कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दैट शोज यू आर वेरी इररेस्पॉन्सिबल। Nuclear weapons are not for war, they are for deterrence। Do you understand that? तो इंडिया जब न्यूक्लियर को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो वेस्ट में एक तरह की आप समझ लो सेंटिमेंट डेवलप हुई दैट इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एंड हेंस वी कैन पुट मनी इन इंडिया। अदरवाइज दे थॉट व्हाई यूएस पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन ईरान, because they feel Iran will use that money and they will process uranium and they will develop nuclear weapon, which Iran I think is anyhow going to do, but only time ही लगेगा उनको unless US intervenes militarily। तो जब US ऐसे sanctions लगाता है तो वो यही देखता है कि न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। बाद में हमारे लिए एक्सेप्शन बनाया गया, एनएसजी के तो हम मेंबर थे नहीं, nor we signed the NPT, Non-Proliferation Treaty। But are you aware about the 1-2-3 nuclear deal between the Manmohan government and the then US government of George Bush? तो ये 1-2-3 डील हुई जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट आए इंडिया में, और उसके अराउंड थोड़ा सा वो हुआ, मतलब देयर वाज सम एक्टिविज्म, दे वर नॉट अलाउड टू इंस्टॉल्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लाइक महाराष्ट्र में भी हुआ बहुत एक्टिविज्म, बिकॉज दोज एरियाज वर टेक्टोनिकली सेंसिटिव, और वहां पे अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, आर यू अवेयर अबाउट द शर्नोबिल डिजास्टर, तो वैसा कुछ हो जाता। बट एनीहाउ, एनकरेजिंग ग्लोबल लिक्विडिटी कंसोलिडेशन, इंटरेस्ट रेट्स, मतलब इंटरेस्ट रेट भी इंडिया में कम होने लगे सो एज टू एनकरेज द रिफॉर्म्स। अब देखो, अब जो रिफॉर्म्स हैं वो दो चीजों पे फोकस करते हैं, और ये आपकी लर्निंग है इस चैप्टर की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। करेक्ट? नाउ देयर आर 4 पार्ट्स टू दैट। वन इज क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, trust based governance and private sector participation।
This leads to efficient resource allocation and enhancing productive potential of economy and its people. Very simply put, ease of doing business and ease of living will happen when there is better agricultural productivity. More public goods would be created. Quality public goods. What are public goods? Which are non-excludable in nature. Like suppose road. जैसे रोड पे अगर कोई चल के चला जाए तो अगला जो चल रहा है उसको आप हटा नहीं सकते वहां से. Do you understand that? They are non-discriminatory, non-excludable in nature. They are public goods. And trust-based governance. Trust-based governance मतलब, are you aware about the retrospective taxation that happened with Vodafone in India? कि पहले तो बोला कि टैक्स नहीं लगाएंगे, बाद में टैक्स लगा दिया, वोडाफोन की पूरे सेंटिमेंट चली गई, कंपनी बिल्कुल बाहर हो गई इंडियन इकोसिस्टम से. भी है थोड़ा बहुत इधर उधर, बट द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट जब आपको, मतलब ऐसे सोच कर देखो, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, गवर्नमेंट इज द अंपायर एंड इट इज डिसाइडेड दैट if any delivery is bowled outside the leg stump, that's a wide. Got it? But in your case, suppose you're the batsman and somebody has bowled that delivery which is going outside leg stump, and you look at the umpire, he says, I have changed the rule. Now it is not wide. But when you come to bowl, he says, I have rechanged the rule. It is wide now. Will you be interested in playing that game? So players get disincentivized when they do not see stability in, say, tax policies, for example. Corporate tax इतना है रेट, लेकिन आप अचानक से आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, या समझ लो इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, पॉपुलर एक्सपेंडिचर कर दिया कि अब डेफिसिट बहुत बढ़ गया. कहां से लाए पैसा? चलो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनका गला दबाते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स आपने बढ़ा दिया एकदम से. So ये सारे कॉर्पोरेट्स, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन द इकोनॉमी फॉर लॉन्ग. सो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, that is now the focus, and private sector participation, because the future growth of India will be led by the private sector. That is for sure, right? Because the income levels will increase only when private sector participation will increase, and government will also be able to produce quality goods. अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. आप यूएस में चले जाओ और वहां का बस स्टॉप देखो, कोई भी जो बस स्टैंड होता है उसका वो देखो, और इंडिया का बस स्टैंड देखो. Forget about Delhi, go to some tier 2 city. आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा. क्यों? वहां पे भी तो गवर्नमेंट ने बनाया है, यहाँ पे भी. इस यहाँ के पब्लिक स्कूल में देखो, वहां के पब्लिक स्कूल देखो. इन सम टीयर 2 सिटीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स यू विल फाइंड दिस, कि अगर 5 क्लासरूम है तो 3 के बाद अगले 2 में कभी खुला ही नहीं है वो. हो सकता है उसके अंदर पेड़ वेड़ है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? व्हाई इज दैट? डू यू थिंक दैट इंडियंस कैन नॉट मेक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर? वी कैन, बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट के पास फंड तो लिमिटेड है ना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे बिजनेस कर रही है. इफ गवर्नमेंट channelizes all its funds in creating quality infrastructure in the country, others will follow suit. Crowding in effect will happen. और जब क्वालिटी अच्छी होगी, अगर पब्लिक बसेस की, ट्रेन्स की, इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप देखोगे कि इट विल हैव अ पॉजिटिव रैमिफिकेशन ऑन द इकोनॉमी. यूएस में यही होता है कि यूएस गवर्नमेंट बिल्ड्स लेस इंफ्रास्ट्रक्चर बट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. और यूएस भी देखो कोई छोटा कंट्री नहीं है, सो ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स द जियोग्राफिकल साइज ऑफ आवर कंट्री. बट वो कैसे कर रहे हैं इतना? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का बिल्कुल प्लान एकदम क्लियर है और फोकस्ड. एनीहाउ, सो लुक हियर, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स एंड enhance opportunities, efficiencies and ease of living. इसमें क्या होता है? Infrastructure intensive policy making. It started with Golden Quadrilateral. A quantum leap in infrastructure outlay by government is visible in the last few years, laying out a platform for crowding in private investments. The moment government creates infrastructure, crowding in होगा ही होगा. With strong forward and backward linkages, physical infrastructure will enhance the economy's productivity in the medium term. You understand medium term? Forward backward linkage क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे कुछ सर्विसेज भी लिंक्ड है, लाइक से फॉर एग्जांपल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स. सो एवरी लिंक दैट इज क्रिएटेड बिफोर द क्रिएशन ऑफ एसेट इज बैकवर्ड. एवरी लिंक आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द एसेट दैट इज फॉरवर्ड. जैसे टोल कलेक्शन रोड बनने के बाद ही होगा, दैट्स अ फॉरवर्ड लिंकेज. डू यू गेट दैट? सो इट स्पिल्स अक्रॉस सेक्टर्स. तो आप देखो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का दिखा भी रहा है कि कितना ग्रोथ हुआ है. तो क्या क्या हमने किया है इन्वेस्ट? रोड कनेक्टिविटी, भारतमाला, सागरमाला, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे अपग्रेडेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन का कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति, पता है आपको वो? देन ऑपरेशनलाइजिंग न्यू एयरपोर्ट्स, एयर रोड्स, उड़ान.
देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2021. दोनों में फर्क क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है आपको. Monetization pipeline is taking private money and putting it into brownfield projects. What are brownfield projects? It means those industries which exist now and they have gone sick. Got it? Greenfield is fresh projects. Got it? अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी देख लो, इसमें जो भी एम्फेसिस हुआ है वो सबसे पहले कहाँ हुआ है? जैम, ट्रिनिटी, जन धन, आधार, मोबाइल. तो ये इट गिव्स अ पुश टू फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? देन डिजिटल पब्लिक गुड्स, इसमें ई-केवाईसी हो गया, डिजी लॉकर हो गया, यूपीआई हो गया, ये सारी चीजों ने भी पुश दिया है. Then there are certain portals which have been created, digital portals for unorganized workers, which is e-shram portal, street vendors, Swanidhi, then tax paying firm GSTN और MSMEs के लिए उद्यम पोर्टल. ये सारा सब कुछ बना हुआ है. और देखो, some of the recently introduced digital initiatives such as open network for digital commerce and account aggregator framework will open up further avenues for e-commerce market access and credit availability for smaller businesses and strengthen the expected economic growth in the medium term. अब एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, open network for digital commerce, ONDC. Now अभी कैसा होता है कि बायर्स और सेलर एक ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि सपोज यू आर अ सेलर इन Amazon. You can sell your products only to buyers in Amazon. If you are a seller in Flipkart, you can sell products only to buyers of Flipkart. लेकिन ये क्या है? एक इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म होगा जिसमें समझ लो Amazon का एक सेलर फ्लिपकार्ट के एक बायर से खरीद सकता है. You get it? तो ये जो ई कॉमर्स कंपनीज का प्रेडिटरी प्राइसिंग है ये टूट जाएगा इससे. You get that? Like say for example, they charge a lot for logistics. Now these e-commerce companies are actually warehouse companies. Do you know that? वेयर हाउस में जमा करके रखते हैं कि लॉजिस्टिक्स वो आएगा ही नहीं आगे चल के. वो मतलब दैट विल नॉट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस अनलेस यू गेट वेयर हाउसेस प्रिपेयर्ड. तो वेयर हाउस बना के, गोदाम बना के अपना वही कर रहे हैं कि दे क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस, देन दे पुश द प्राइसेस. लाइक से फॉर एग्जांपल, हैव यू सीन आउट ऑफ स्टॉक? दे क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस एंड देन दे पुश द प्राइसेस एंड देन दे डिलीवर द गुड्स. गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होगा, अभी इंटरऑपरेबिलिटी होगा. आप फ्लिपकार्ट के बायर हैं, आप जैसे फ्लिपकार्ट पे जाते हो, वो इंडियन ओरिजिन कंपनी है और अमेजॉन तो वेस्टर्न कंपनी है, अमेरिकन कंपनी. अगर आपको फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता तो अमेजॉन या कोई और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. डू यू गेट दैट? अकाउंट एग्रीगेटर क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर इज लाइक से इट्स आरबीआईज इनिशिएटिव. इट्स एन इंटरमीडियरी. इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल डेटा शेयर होगा जिनको भी चाहिए फाइनेंशियल डेटा. जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सेक्टर में कितना लोन मिला है या इस सेक्टर में कितने सेल्स हुए हैं, so you get all those data and these data are important for decision making. So let's see steps that have improved ease of doing business. ये क्या है? सबसे पहले नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब सारे अप्रूवल एक ही विंडो. अब जैसे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं आज, तो सुबह स्टार्ट करिए, दोपहर तक कंपनी आपकी बन जाएगी. पहले 1 महीना लगता था कंपनी बनाने में. Then Jan Samarthan, portal for credit linked central government scheme. Jan Samarthan is a portal for people seeking loans linked under 13 credit schemes of India. तो उसमें मिल सकता है आपको. उमंग ऐप, उमंग ऐप अगर गवर्नमेंट के सर्विसेज आपको लेने हैं तो. Then PM गति शक्ति, are you aware about that? Now it's a GIS enabled. GIS means Geographic Information System. जैसे आपका गूगल मैप होता है वैसा ही enabled system है, where we are thinking of developing multimodal projects. Multimodal means उसमें ट्रेड, उसमें रोड भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है. Have you heard about कलादान multimodal? तो उस टाइप का, ठीक वैसा कुछ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Then comes trust based governance, building trust between the government and the citizens. It unleashes what? Efficiency and also improves sentiments in the economy. तो देखो दो चीजें हुई हैं जो आप बोल सकते हो. एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और दूसरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट और रेरा गाइडलाइंस. पहले क्या होता था कि वही मैंने आपको बताया चक्रव्यूह प्रॉब्लम. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, व्हाट इज द डिफरेंस? इंसॉल्वेंसी मींस यू आर नॉट पेइंग योर डेट ऑन टाइम. बैंक्रप्सी इज अ लीगल प्रोसेस wherein you say that I am not in a position to pay back. You get that? So insolvency and bankruptcy are allowing corporates, failed corporates, to go out of the system. As they go out of the system, they release their resources, which could be now utilized by
next corporates. You get that? And honest failures should be encouraged. Otherwise, it's like punishing someone for failing. And if a society starts punishing people for failing, that society will not grow. Then you have the रेरा guidelines. देखो रियल एस्टेट में जितना करप्शन था उतना कहीं नहीं था, ठीक है, सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं था तो वो रियल एस्टेट में था। रेरा गाइडलाइन से क्या हुआ है कि बायर्स, सेलर्स, ब्रोकर्स, इन सब को लिंक कर दिया गया है एंड गवर्नमेंट इशूज दीज गाइडलाइंस। तो जितने भी अगर आप अभी देखोगे कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा कहीं पर, सो यू विल सी दैट दे विल क्लेम इट इज रेरा कंप्लायंट। यू अंडरस्टैंड दैट? दैट मीन्स वी कंप्लाई टू द गाइडलाइंस ऑफ रेरा। नाउ डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे देखो फ्रॉड हुआ है तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कोई इसने जेन्युइन मिस्टेक कर दिया है। सपोज देयर इज अ डायरेक्टर of a particular company wanted to do some investment in a particular sector, that investment decision went wrong, तो कई केसेस में क्या होता था कि इनको जेल जाना पड़ता था कई सालों के लिए। तो कौन लेगा डिसीजन? कोई नहीं लेगा डिसीजन। लोग बोलेंगे कि जो डिसीजन हो रहा है वही चलने दो। दिस decriminalization, it is done under the Companies Act Amendment 2013. It has improved the trust between government and investors. Then obviously tax reforms like GST फॉर्मलाइजेशन हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किए गए हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी। पहले क्या होता था, जैसे शेयर आपने खरीदा, उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब आप सेल कर रहे हो तो उसमें एक डीडीटी लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। या समझ लो कंपनी आपको आपके शेयर पे पैसा दे रही है, रिटर्न दे रही है। समझ लो आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, समझ लो ओएनजीसी का शेयर है, अब वो शेयर में डिविडेंड देते हैं, वो डिविडेंड दे रही है, उस पर टैक्स लगा देते थे। इट्स लाइक टैक्स ऑन इंटरेस्ट, वो भी जाना चाहिए। अगर वो जाएगा तभी लोग और बैंक में सेव करने के चाहेंगे, बिकॉज मेनी पीपल वांट टू सेव मनी। एंड देन फेसलेस असेसमेंट, ये एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई द ओवरऑल टैक्स कलेक्शन हैज इंप्रूव्ड। फेसलेस असेसमेंट, कि पहले क्या होता था, दैट देयर वाज दिस नेक्सस where some of the officials of the income tax department, they would go into a nexus with the polluted corporates and they would save their taxes, right, in lieu of some bribe or something like that. But वो faceless कर दिया आप गवर्नमेंट ने कि आप घर पे बैठ के इंटरनेट खोल के अपना टैक्स फाइल करो, खत्म। Now look at this, मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है। जीएसटी का कलेक्शन फॉर्मलाइजेशन भी हो रही है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का डेटा है। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर एज अ को पार्टनर इन डेवलपमेंट। नाउ आत्मनिर्भर भारत, वी कैन नॉट अचीव दैट अनलेस वी गिव अ लेवरेज टू द प्राइवेट सेक्टर। नाउ व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स टू डेवलप ग्लोबल चैंपियंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। साउथ कोरिया ने ये किया था, मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है then it has to be export led. You get that? So that you get dollars that will give more incentives. So that is what is being doing. Most sectors are now open to 100% FDI. India's gross FDI increased from an average of 2.2% of GDP to 2.6%. तो ये भी बहुत जंप है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इसमें री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन, मल्टी मॉडल, वो सारी चीजें। व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? Logistics is the cost which is incurred in loading, unloading, transporting, etc. Right? Strategic sectors such as defense, mining, space have been opened for private sector. But अच्छा देखो, in USA, space is a private sector. Elon Musk बना रहा है ना SpaceX, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. But you have to do that because that is one company that will generate large number of jobs, also give a push to scientific temper in the country. But yes, you can regulate it. Investment incentives and easing business compliances resulted in increase in number of recognized startups. देखो पहले कितने थे 2016 में 452 और अब देखो 2022 में कितने 84,012. Can you see the quantum jump? देखो पहले ऐसा होता था, जैसे कोई स्टार्टअप कर रहा है तो लोग उसको बहुत ज्यादा encourage नहीं करते थे। सबसे पहले तो घर वाले डिस्करेज करते थे, तुम स्टार्टअप करके क्या करोगे, यू हैव अ वेल सेटल्ड जॉब, व्हाई यू वांट टू डिसरप्ट दैट। बट नाउ पीपल्स माइंडसेट हैव चेंज्ड. People encourage that you can do startup. Why? Because overall household incomes have improved. अगर household के पास इतना पैसा नहीं था कि एक ही इनकम का सोर्स है, समझ लो वही बोल रहा है कि नहीं अब मैं नौकरी छोड़ के स्टार्टअप करूंगा, तो घर छुड़वा देते थे। बट अब जो है लोग स्टार्टअप की तरफ जाते हैं और बहुत एनकरेज भी किया जाता है उनको। Now enhancing productivity in agriculture,
अब एक चीज देखो, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है 4.6% ड्यूरिंग द लास्ट 6 years, विच इज कमेंडेबल। पहले 2 के आसपास ये रहता था, काफी जंप हुआ है इसमें। दिस पार्टली बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून्स एंड वेरियस रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन फंड एंड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना, ये सब सुना है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एंड देन फसल बीमा योजना, all those kind of things. Farmer producer organizations ये काफी बन गए हैं अब, मतलब the farmers are the producers, right? They are also the traders. And the National Agriculture Market (ENAM), which has connected multiple mandis across the country. And then Agri Infrastructure Fund (AIF). Now this is yet to take off, but अगर ये बन गया एक बार और एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया अगर कंट्री में, तो आप ये मान के चलो कि इंडिया के जीडीपी में कम से कम 2 to 3% का ग्रोथ तो आ जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ बिग सेक्टर इन आवर कंट्री एज फार एज पार्टिसिपेशन इज कंसर्न। किसान रेल, अग्री हॉर्टी कम्युनिटीज, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब जो पेरिशेबल कमोडिटीज है उसके लिए किसान रेल। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज अ मार्केट लेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स एंड सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये सब कुछ किया गया है। ग्रोथ मैग्नेट्स इन दिस डेकेड 2023-2030, इसमें क्या है? हेल्थी बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। Second, digitization reforms, global supply chains diversification. Obviously, Russia, Ukraine and COVID has allowed us to look towards other markets and reform agenda of the government. इसमें सबसे important अगर कुछ है तो वो reform agenda है, because if this reforms, the train of reforms stop, तो जो भी हमारे gains है, they would all go in vain. Got it? So that is it. That is the class for the day. बताओ जो पढ़ा ठीक ठाक समझ में आया? अब ये आप PDF रिवाइज करिए और देखना कि इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बट आई हैव डन दिस क्लास विद एन अजम्पशन, एंड व्हाट इज दैट अजम्पशन? कि आपको पता है जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें क्या है, राइट? और अगर यही नहीं मालूम, देन रिवाइज योर बेसिक्स फर्स्ट, देन सर्वे विल मेक सेंस। थैंक यू वेरी मच।